Hi everyone. We are just starting, so we'll take a minute so that more people can join in, so that we can finally start our session. And in the meanwhile, if you could retweet the space, it'll be very helpful so that more and more people can join in, and we can have a very exciting session. So yes, I'm waiting for a couple more people to join in. In the meanwhile, please retweet the space. Um, so that it's most beneficial for everybody in the session here. Thank you all for joining. So I can see a lot of you have joined already. We'll just take like 30 more seconds and then probably start. Thank you all for joining in. And please retweet the space in the meanwhile if you can. That'll be really helpful. So Sheel sir will be joining with us shortly. He's here with us. I'm just waiting for him to get free so that he can be fully active in the space here. Hi, Monica, ma'am. I'll just send you an invite if you're around. We would love to hear your um, views on the topic. Whoever is happy to enlighten all of us on this topic, agreement, disagreement, suggestions, woes, complaints, ask for the mic and let's freely gather as many views as we can. And I'll, of course, be around. Let's gather more opinions and views. Maybe I step in a little later. I should act more as a facilitator. Anger, angst, excitement, happiness, resentment, suggestions, super IQ, whatever you have to offer. Feel free, grab the mic, talk. So we've got a couple requests. We'll have them up soon. But in the meanwhile, what I would like is if okay, so Monica G is here. I've heard you. Okay, Mr. please. JPS, JPS, we have just given you the mic. Let the host invite a person to talk. Sure. Turn by turn, will also then make it engaging. So let's start with Monica ji. Thank you, Sushil ji. Been hearing about the saga. I personally feel that everybody who has provided any kind of advice, and I have this very strong view simply because I also know of how many people get impacted when the advice is not taken well or doesn't go down well, especially in terms of results. So, fintech or fin influencers, especially on social media, need to bear responsibility for the kind of information they give out, while nobody is responsible for the end output. What shouldn't deter them is to provide the risks upfront. I think what is happening now is, and I'm reason I have very strong views is because the same thing has happened in another arena, which has actually eroded the trust of a complete generation in a form of asset which we may not like, but at this point in time we are all invested in, which is crypto. And the same thing is being played out in a different country, and there are several repercussions that are right now being considered by the governments getting involved. My problem with what has happened here is there are completely different and diametrically opposite things that are happening. One is, can screenshots etc be considered to be liable for what a person does in terms of financial advice, and should only this person be singled out for the kind of financial advice that has been given out? If it has worked well, there is no complaint. I don't think there are any going to be any damning judgments around this, except there need to be rules. And if there are rules, then everybody needs to play by them, whether you have a great presence on social media or regardless. And my second problem with what has happened, and Sushilji has actually spoken about this earlier in a space earlier this week, is about how we are damning one person based on their social media output, which is basically being considered or being created to be able to deride the person's achievements or whatever advice has been told out. Sushilji has spoken very passionately about what has happened, how this may have been
a trap or not. And again, we should go back to that space. I'm not going to say more, but all I'm saying is, when I hear people completely give a free chit to a person saying ये तो होता ही है क्योंकि गुस्से में तो कुछ भी जायज़ है, तो बॉस ये नहीं चलता है। ऐसे तो फिर आप बोल दीजिए कि मर्डर भी जायज़ है और सब कुछ जायज़ है, क्योंकि आपने एक पर्सन का एग्ज़ाम्पल बनाकर पूरी इंडस्ट्री को आप लोग डिराइड कर रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलना कि गलती हो गई और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये भी बहुत गलत है। मैं रीज़न ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ वुमेन के ऊपर आकर ठहर जाती है और वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेटिव हैं। But somebody is not being made an example of because of their comments only. There are severe other allegations which are right now being brushed aside, only because this has become now about women and trolling and everything, which I feel is very unfair also. Sorry, there are a couple of aspects here that I've touched upon, but I just wanted to make sure that I touch upon this because there are larger ramifications of this, instead of just the person and the problem. Uh, Rima, is it okay if I kind of respond to the few brilliant points Monica ji has Yes, started with? yes, 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 yes. Sure. I think that'll It be need perfect. not be a speech giving ceremony. We can always have a discussion. So, Monica ji, correct me if I've missed anything from the few things that I've gathered from what you've said. Extremely troubling behavior from a certain fintwit is one thing, and that women are also, by being muted on this, kind of a co-partner in this. So, okay, an issue related to women feminism. Um, okay, and then the core issue is irresponsible hoodwinking, cheating, or misrepresentation going on in the business, by which innocent newcomers to the business and even very seasoned people can get sucked in. I hope we can do justice to the core issue. See, there is no doubt that somebody ended up or somebody is. I cannot judge if somebody is regularly like this because I don't know that person, I don't follow that person. But one has seen such fracasses. So maybe somebody is habitual offender, somebody has done it at one-off basis. All I would simply say for anyone in the business of stock markets, anybody who has a difficulty in saying sorry is either actually not really in the markets but pretending to be in the markets, because markets are ruthless. And forget about doing well. The bare minimum survival inside stock markets, anybody aspiring to survive markets needs to have this one skill before anything else, that one will be all the time watchful that before the world takes advantage of my mistake, I should be able to undo it. That's the spirit behind the ability to take a stop loss. The other reason why people are unable to take a stop loss is it's a corollary of that. Anybody with an ego greater than what is necessary for survival. Some survival level ego is required, otherwise, people will start walking out of the window instead of walking out of the door. So, some sense of identity is required, but when heightened sense of identity and obsessive behavior, that is, any time trying to defend itself, comes in, those people suffer too much in social life. And money is a very social affair, money is a very human affair. Monkeys, rats, donkeys don't know money, they don't trade markets. And therefore, whatever charts, quant models, mathematics, abracadabra, black magic, whatever anybody can use in the markets, you cannot deny the fact that money is a very human affair. So, without that attitude to be watchful to catch one's own mistakes before others do, it's impossible to survive markets. So, anybody who claims to be making actually good amount of money or even just surviving markets for 10 years, if he is having a difficulty in accepting a goof up before that goof up can become so expensive that the fellow can end up trending more than Narendra Modi for 2 days. Narendra Modi was a second trend and this guy was trending at the top. So this kind of backlash arises when one ends up being gross or one is regularly gross and then gets so difficult he doesn't want to own it up. So
Such a backlash also suggests a corollary of that or a reverse computation of that. Such a mindset cannot survive markets, forget about making money. So, all these big claims and big videos need to be put under a scanner. Where does this money come from? And having said this one part, let's not get obsessed with one individual's personal behavior. Even though the highest pedestal of a professional code of ethics within the financial world is the CFA Institute Code of Ethics. And some parts of that code of ethics do have examples like this. A established analyst cannot be seen as unprofessional even in general walks of life. So during business hours, if a CFA charter holder is seen drinking unduly more than is civic. So he took a client out for lunch and he got drunk. He started slurring, he started wavering while walking out, he was lurching out of the door. Upon complaint and upon giving proof, CFA Institute can cancel his charter. So drinking is one example, or for such matter, to come across as crass can actually result into a code of ethics penalization subject to one is regulated by such a regulation. So at this point in India, we do not have any such unprofessional behavior in civic discharge of your engagements. So let's not consume too much time on it at this discussion. And please, none of the women should take it as that, berating women does not matter. Actually, I'll tell you what, women can take it up as a women's issue because it's become a very popular idea these days to thrust womanhood. But it hurts every male as much. A daughter is a daughter of a father as well as that of a mother. A daughter is beyond genders. To me, a daughter is a divine connection. For she is the only relative God provides you whom you can practice love with without expecting anything. बेटे के साथ कहीं ना कहीं मोह आ जाएगा, मेरे को बुढ़ापे में संभालेगा, मुझे पोते देगा. वाइफ के साथ तो मोह ही मोह है. माँ बाप के साथ भी मोह है कि भैया पापा मेरे को सिनेमा दिखा देंगे, मम्मी मेरे को बढ़िया खाना खिला देगी. ब्रदर्स के साथ भी ये मेरे को कंपनी दे देगा. If at all it is humanly possible to spend years and years of loving and giving without actually expecting anything, it is easiest to happen with a daughter. और daughter माँ की भी होती है, बाप की भी होती है. तो I personally, if this was the discussion and debate, I would have argued it this way. Let's not call it a gender issue. Connecting it with the larger gender issue that most of the cuss words in our vernaculars come down to cussing the women in our life. So that's a separate thing. Let's not go into tangents. There's a lot of material to be discussed about performance measurement and performance reporting. Let's keep it a stock market focused conversation. And having spoken on behalf of everyone, the point that anybody who has a huge problem in acknowledging a blunder, just standing up and saying, look, I don't feel it's right to give any reasons, whether it was my health, bad weather, or stormy markets. I've ended up doing something totally unacceptable. I hope all pardon me. This trend would not have happened, this backlash would not have happened. So people will pay a price for their ego. And that ego becomes extremely expensive when you are in super fast trading. Options require you to have super fast trading. So having said this, the only takeaway I want all of us to take in today's conversation is Sundar's saga took a blowout because he became very demeaning to the whole spiritual idea of a daughter. And such a behavior with the difficulty to say sorry in a timely way, in a reasonable way, in a humble way, is proof to me that such personae actually have not done much in the markets. They've been doing things around the market. So let's go back to other speakers and let's scratch more on what kind of harm this kind of unregulated performance reporting has. And now that a very welcome step has been taken, at least something is getting done more than what was not at all there. Sensibull has taken some step which nobody thought of. So in that sense, they have taken a yeoman's role. But what are the challenges they may face? Because this is a very corny business. Too many frauds have got in. What are the challenges they may face? What are the shortcomings that can happen?
And eventually, what is that lead taken by Sensibull should result to, when my turn comes to speak properly my presentation, I'm going to talk a lot about the steps the regulator can take to have a professional basis for performance measurement and accurate performance reporting. When is performance reporting necessary? Because in this bedlam caused on Twitter, when Babas are cursing Babas, चोर बन गया मोर और कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, एक बाबा दूसरे बाबा को चोर बतलाएगा. तो too much of twisting the narrative is going to happen. Some people will scream, give me your income tax returns, right? So you go to any professional investment advisor registered with SEBI, a proper PMS firm, or a mutual fund company, you can't make such demands. So those who are standing on the pavement with their khomchas and rekhadis, trying to sell revadi or pani puri or whatever, chaat puchka, they will indulge a customer who might even ask them to, take their pants off and walk the streets. But that cannot become the norm. That cannot set the narrative. There's worldwide a professional way to do it, and that's what I'm going to explain when my turn comes to speak. Otherwise, kal ko koi bolega, easily Sensibull can become a target of so many allegations. And I really hope they have the thick skin to survive it. They've done a good thing, started off something. But is this start enough? Or what is the kind of roadmap from here things can go to? So that's what I want to discuss at some point. But in the meantime, anybody has suffered, anybody has noticed certain, unprofessional maneuverings. I am not saying this to encourage to make this into a mudslinging match. Rather, even if one particular individual or an organization or a bunch of people may have hurted you financially, don't make it a personal attack. Don't use cuss words. Let's have a professional forum of a conversation here. It should not become a vendetta session. It should not become a personal score settling session. And there are some people with, say, a profile like trader, no name, no human profile. Even if you could have created a fake handle with a fake human name and a fake human profile also. So, such handles that do not look like human, we will also give you the mic, but at a convenient stage and with or without a human name or a human profile. If anybody gets into cursing, cussing, gali galoj, trying to do troll behavior, trying to settle personal scores, even if you have a personal grievous hurt, talk about the hurt. Don't berate a person. Let's talk about issues. Let's talk about processes. Let's talk about the features we would like to see in the marketplace. But let's not use this as an opportunity to cast rotten eggs on anyone's face. So over to you, Rima, again, and maybe you want to go in order of Aditya, JPS, and then maybe Yogesh, Deepak, Vikram, in whatever order. And you call me in when you want me to comment or answer a question, and maybe a lot of things would have been already answered, and maybe I'll speak towards the very later end again. Perfect. So we'll go in that order. We'll go in whoever came in first. But I'd like to thank you for your initial views. And also, Monica ji, thank you so much for joining in. It's always glad to have you around when we are having this fintech kind of sessions. And Monica ji, perhaps you will consider staying around and take a number of answers, question answers, and as well as, chime in into the conversation. Let's make it conversational. Step in any time you have something to say. Unmute your mic and react or mention anything new that you have. Please be around. perfect. So let's just start with Aditya. So Aditya, please go ahead and tell us your views about the current situation. Hello, hello, everyone. Thank you for accepting my request for the speaker. So, मुझे ये लगता है कि ट्विटर में जितने भी लोग हैं वो उन्हें पॉपुलर बनना है, तो पॉपुलर बनने के लिए वो सब ये हरकतें करते हैं कि किसी को गाली देंगे या किसी को कुछ करेंगे या ट्रोल करेंगे, क्योंकि उससे सबसे तेज सबसे जल्दी उससे न्यूज़ फैलती है। और मैंने कुछ वेबसाइट्स भी देखी हैं, उसमें उसके थ्रू हम ट्विटर के लाइक्स और वो हैशटैग को ट्रेंड कर सकते हैं। सो 1 घंटे का ट्रेंडिंग का 15,000 कुछ लगता है। तो हम
मतलब ये सब लोग यही करते हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एज अ सीड पॉइंट करते हैं कि भाई किसी को उनने कुछ बोल दिया उटपटांग या कुछ कर दिया उटपटांग, फिर उसको ट्रेंडिंग कर देते हैं कि भाई उनकी प्रोफाइल फेमस हो जाए. सो I think we should just ignore these nonsense and things and just focus on like good part of the Twitter. But like ये मेरा व्यू है. um, किसी और का कुछ और हो सकता है. So, Aditya, where is the problem? Connected to the topic today, let's focus on that. So problem is, I think people should get aware कि like ये सब people should know what is fake and what is real. People should understand how to check fake things, fake people. Like one of your point was कि like जो भी trader successful होता है वो बहुत humble होता है. तो this point I very like 110% agree with. Like जितने भी लोगों से मैंने मिला जिनके पास ही फंड 20 करोड़ से ऊपर है, they are very humble, very 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 humble. So and they लाइक उनसे अगर कुछ गलती भी हो गई तो वो तुरंत सॉरी भी बोलते हैं. लाइक वो इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं. तो मुझे लगता है कि ये लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन सही बंदा है कौन गलत बंदा है. Perfect. I'm hoping you're done. Yeah, thank you. Yeah. So your point was just that it's very difficult, to know that with all this, like manipulation, it's very difficult to understand that, like who to trust and who to not. I think this whole issue is about that only. So Mhm. okay, yes. Great points. Thank you. So Mhm. I think we'll take another speaker again, and then probably we'll. Okay. Can I So speak? And those who think they will not have immediately anything more to say, you can look at the three dots above, Hello. right at the top, and click them and go back to the speaker mode. When you want to again speak something, you can always request for the mic and we'll add you back. That way, we can keep rotating more speakers. Good evening. Can I speak? Please go ahead. go ahead. Good evening, everybody. This is Jay here. I have been novice in the stock markets, and I have been following this particular thing since a year or so. What I want to state is that people these days are getting attracted to the stock markets because they see quick buck इन द स्टॉक मार्केट्स एंड यू शुड मतलब आपको खुद को केयरफुल रहना चाहिए कि भाई कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होगा या तो कोई भी होगा वो अगर सक्सेसफुल होगा तो अपना एमटीएम क्यों पोस्ट करेगा आपको खुद को समझना चाहिए नंबर वन नंबर टू ये जो पीआर सुंदर टाइप के जो सागा होते हैं आई एग्री विथ सुशील जी की उनको तुरंत मिस्टेकलाइज करके अपोलोजाइज करना चाहिए पर दूसरी साइड भी ये होता है कि आप किसी भी पर्सन को कोई भी होता है उसको आप कोई कुछ ड्राइव करोगे तो ही वो ऐसा कोई पोस्ट करेगा कोई ऐसा तो लिखेगा नहीं तो दोनों पर कंसिडर करने चाहिए और हमको एक खुद अवेयर होना चाहिए देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन और देयर शुड बी somebody who can मतलब कोई गाइड कर सके कि बिकॉज इंडिया में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन और वो बढ़ेगा तो ऐसा होना है और ऐसा बढ़ेगा तो हाउ कैन पीपल हु आर स्टॉक मार्केट मतलब जो जिनके जो 15 10 15 साल से हैं सुशील जी हैं रीमा जी हैं तो कोई भी है कैसे कोई मदद कर सकता है कि किसी को गाइड कर सकता है गाइडिंग इज वेरी नेसेसरी एंड हैंड होल्डिंग इज वेरी नेसेसरी तो लोगों की रुचि बनी रहेगी एंड इसकी सैंक्टिटी भी रहेगी दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज Okay. Ji, हेलो I mostly no, Rajesh ji, please wait a second. Mute your mic, please. We'll come to you. We'll come to you one after the other. So I agree with most of the things that you said. I mean, those are your views and completely fine. But one thing I have an issue is with that. Like you said, कि उन्होंने जो बोला वो क्यों बोला? Like something drove him to that point to make those comments. I think a lot of people here would entirely disagree with that because
a lot of people say anything, a lot of things. Like, if you are active in the Twitter scene, if you make any comments, a lot of people will not like those or will personally attack you or abuse you. But that does not mean you can, like many make any insensitive comments. That is very insensitive, especially, like when, like people respect you or people see you as a guide. And then if you make any, irresponsible statement, it's very like, I don't, any woman here would agree that we don't want to be stuck in the, men women thing as well. We want to get over it. We want to be very professional. Every woman here wants to be very professional. So there is nothing like, they have somebody drove him or somebody instigated him to make those comments. So, like comments to sabke khud ke hote na. If he did not like something, he could have just avoided or dealt it in any other way. So I'd just like to say that apart from that, all good. Please stay back with us. We'd like to hear more from you. And okay, Rajiv ji, please go ahead. हेलो गुड इवनिंग सुशील भैया हेलो बोलिए राजीव जी, बोलिए। गुड इवनिंग भैया भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये ट्रोलिंग का करते हैं आप जैसे एनालिस्ट लोग हैं उस पर बहुत ज्यादा आप वेटेज देते हो आपको आपका तो इससे अच्छा था लोग आपका इंटरव्यू सुनने के लिए ईटी बिजनेस पे या जिस चैनल पे भी आते हो लोग परेशान रहता है कि सुशील भैया कब आए आपने एक दो बार बोल दिया उसके बाद में ये वाला ट्रोलिंग का या कई बार आपसे सुनता हूँ कि लोग बाग आपको ब्लॉक करते हैं तो वो आप बार बार बोलते हो आप तो उससे आगे की चीज हो। आज के टॉपिक पर रहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा टॉपिक पे फोकस कीजिए। क्या वेरीफाइड अच्छा, स्क्रीनशॉट्स सॉल्यूशन है? ये जो अनवेरीफाइड एमटीएम बिल्कुल नहीं है पोस्ट करते हैं बिल्कुल उसका नहीं ये है सॉल्यूशन है या नहीं है? और अगर सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है है तो इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए? पहले तो सेबी को एक्टिव होना चाहिए हमारे हिसाब से और उसके बाद जो लोग क्या ऐसा करे करे सेबी एक्टिव होके? क्या करे? ट्विटर पे आके आपके मेरे साथ ट्वीटिंग करे? आप स्पेसिफिक स्टेप्स बोलिए सेबी को क्या करना चाहिए। पहले तो जो लोग भी ऐसा करे उनके पास सो कॉज नोटिस इशू करे जरूरत पड़े तो उनका अकाउंट ब्लॉक करे उनका ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक करे वेरीफाई क्योंकि अभी इंडिया में 5% लोगों के पास वो डायरेक्ट इक्विटी में है जैसा इक्विटी बढ़ रहा हो सकता है ये मेरे लाइफ में ही 20% हो जाए रिटेल इन्वेस्टर का तो लोग बाग तो ऐसे अगर ट्वीट देखेंगे तो लोग बाग तो चीट हो जाएंगे। और कोई सजेशन और कोई कमेंट्स? नहीं भैया थैंक यू। Let's have Chetan Shrimal ji. Chetan ji, please unmute your mic and let's hear your thoughts. Does sensible kind of screenshots solve the problem completely? It's a partial solution, it's a non-solution, and whatever you feel it is, then what more do you want? Mr. Chetan Shrimal, are you around? Yeah, just good evening. Good evening. सुशील जी मेरा मानना तो ऐसा है कि ये गेम ही खोटा है जो स्क्रीनशॉट भेजने का है। Nobody can be sure of anything. Nothing is there is nothing like a solution to it. So best thing is everyone has his own earning and everyone has his own losses. So no point of talking in this manner or taking any advice from the others. This is the all cheatings I've done for many long years. Now it should stop. Can you expand it a little bit? Why even verified screenshots are not good enough? You said that. How What do you mean by that, and why do you say this? See, can you certify it in your IT return? No, so there is no point. No, but some people, even in IT returns, some people may be making a lot of trading profits, and now that trading profits are classified as business income, you may do tax gapla and pay very little income tax. Yeah, that's a different thing. No? But how can be sure following people or the people who give us screenshot, okay, this is the right thing? So my point is, what I have been keeping saying for a number of days, neither unverified screenshots is outright 420 fraud, cheating, forgery. Both. इनको उठा के जेल में ठूसो 4-5 लोगों को. Yes. There should be some activism whereby 424, 467 ये सारे criminal sections लगा के इनके ऊपर केस ठोकना चाहिए 4-5-6 लोगों But पे. that's why they are deleting all the screenshots right now.
नहीं तो जो भी कर ले गंदगी को सफा जितना भी कर ले, फ्यूचर में अगर कोई भी करता है तो इनको सबको उठा के पहले तो अंदर करो। कम से कम 4-5 लोग भी अंदर जाएंगे तो क्रिमिनल लॉ में आता है। Yes, उसके लिए सेबी को भी काम करना है। पर अगर पब्लिक देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम न सेबी है न बाबा लोग है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं डाइग्रेस हो जाऊंगा, पहले मेरा जो पॉइंट बोल रहा था उसको खत्म करने दीजिए। ओके। सो अनवेरीफाइड स्क्रीनशॉट तो क्राइम है आउटराइट। वेरीफाइड स्क्रीनशॉट क्या है? सिलेक्टिव पॉइंट पे वेरीफाइड कर लेगा। तो चलो सेंसिबल ने एक अपडेट किया कि हम शाम को 3:30 बजे या कोई सर्टेन विंडो में करेंगे। ओके। दैट इज ओनली ए पार्शियल प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द सीएफए करिकुलम। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव काम है, इसमें 100 तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है। एक बंदा 5 लाख की कैपिटल से पूरे महीने ट्रेड करता है। पर I चेतन don't जी, मैं understand आपको why म्यूट कर anybody रहा should हूँ। चेतन believe जी, it. मैं म्यूट कर रहा हूँ, साउंड इको आएगा। एक बार में एक आदमी को बोलने दीजिए। जब आप बोलेंगे तो हम म्यूट रहेंगे। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मान लो एक बंदा लगातार 100 दिन तक 5 लाख की कैपिटल से कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है। दूसरा बंदा है मंथ के एंड में 50 लाख अकाउंट में डाल के एक दिन में परफॉर्मेंस बूस्ट करके 50 लाख को बाहर निकाल लेता है। तीसरा बंदा है वो 2 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करता है और तीनों लोगों का सेम परफॉर्मेंस आता है, सेम रिटर्न आ जाती है। तो ऑब्वियसली जिसने 5 लाख से कंटिन्यूअसली काम किया वो बेटर है। दूसरा सिनारियो देखिए, एक बंदा महीने के बिगिनिंग में 50 लाख डाल देता है, 15 तारीख को विड्रॉ कर लेता है और बैलेंस खाली 10 लाख करके ट्रेड करता है। दूसरा बंदा 15 तारीख को 50 लाख डाल के मंथ के एंड में पैसा वापस निकाल लेता है। तो वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड इज वन एंगल। एक बंदा है जो 50 क्लाइंट्स को एडवाइस करता है, 40 क्लाइंट को साफ कर देता है, 10 क्लाइंट के अकाउंट में इंस्टेंट पैसा बन जाता है नसीब से, क्योंकि एक्सट्रीमली रिस्की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज खेल रहा है, प्योर गैम्बलिंग का भी सुपर गैम्बल खेल रहा है। तो कितनी रिस्क ले रहा है, उसके सामने रिवॉर्ड कितना है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, सब चीजों को प्रोफेशनली मेजर करने के मापदंड बने हुए हैं। तो जब तक परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स से भी नहीं बनाएगी तब तक अब सेंसिबल के साथ कंपटीशन में और कोई ब्रोकर आ जाएगा, फिर 4 ब्रोकर आपस में लड़ेंगे कि सेंसिबल वाले ने उसका नाम मत लो, चलो दे मे फील सेंसिटिव। वन ब्रोकर विल अलेज अनदर ब्रोकर इज प्रमोटिंग 10 ट्रेडर्स। तो मार्केट में फिर गॉसिप खड़ी हो जाएगी। तो किसको बिलीव करें, किसको नहीं बिलीव करें? सो आई थिंक सेंसिबल हैज एंडेड अप डूइंग समथिंग गुड, but they have also ended up encashing on this crisis, and it is not going to be a sensible encashment except that they will get a lot of eyeballs and the brand sensible will get popular quickly overnight. They also trended और 6-6 महीने ये अच्छा ब्रांड बन जाएगा, लोगों को नाम याद रहेगा कि इन्होंने मुहिम की शुरुआत की थी। बट फ्रॉम वन टोटली रॉटन अप सिस्टम, even just screenshots of any variety are a gotten up system. Even income tax returns somebody may provide, asking somebody's income tax return is as it is wrong. There is a lot of things that is going on inside an income tax return. आपको उसके परफॉर्मेंस से मतलब है, परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका होना चाहिए, वो तरीका रेगुलेटर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? और जब तक परफॉर्मेंस मेजरमेंट नेसेसरी नहीं है तो आपको एज एन इन्वेस्टर, एज ए लर्नर, एज ए ट्रेडर उसको उस मापदंड को खोजना भी गलत है। आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है, आपके घर पे जाके कोई जिद कर रहा है, गले पे चाकू रख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, आपके अपने अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए ना कि आप गलत चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। तो ये भी जो आवाजें उठाते हैं ट्विटर पे लोग कि इनकम टैक्स का रिटर्न दिखाओ, एक बाबा दूसरे बाबा को अपने 50 ट्रोल हैंडल से जलील कर रहा है। सो दैट इज नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ। लाइज आर गेटिंग ट्विस्टेड, न्यू लाइज आर गेटिंग क्रिएटेड। इनकम टैक्स की रिटर्न दिखा दो। इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत पैडेड अप हो सकती है, बहुत सप्रेस्ड हो सकती है, किसी की इनकम 6 नामों में हो रही है। तो इनकम टैक्स रिटर्न इज ऑल्सो नॉट द राइट मेजरमेंट टूल। एनी वेराइटीज ऑफ स्क्रीनशॉट्स आर नॉट द राइट मेजरमेंट टूल। परफॉर्मेंस measurement is an intricate audit, and the rules of that performance measurement audit have to be specified by a regulatory institution. जैसे किसी कंपनी की बुक्स कैसे बननी चाहिए और कैसे ऑडिट होगी, उसके स्टैंडर्ड्स कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट रखती है। इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट अपने रूल्स बनाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो जिस चीज का रेगुलेटर है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स अगर रेगुलेटर के पास अभी तक इतना काम है और ये प्रायोरिटी पे नहीं आया, तो आई वुड एक्सपेक्ट द रेगुलेटर टू make a blanket ban on any kind of performance reporting in any format verified by a third party or ninth party or 11th party or not, unless and until the regulator comes out with the formats for the same. And ideally, any performance measurements should be certified by those on whom law has put legal obligations to do responsible certification. लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर रिस्पॉन्सिबल सर्टिफिकेशन मींस कि अगर वो इररिस्पॉन्सिबल सर्टिफिकेशन करेगा तो पेनल्टी भरेगा, फाइन भरेगा, प्रैक्टिस कैंसिल हो सकती है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू आईटी ऑडिट ऑन टॉप ऑफ नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट। कोई कॉस्ट ऑडिट कर रहा है, कोई टैक्स ऑडिट कर रहा है, कोई रेगुलर कॉर्पोरेट बुक्स की ऑडिटिंग कर रहा है, और रिस्क ऑडिट भी अब आ गई है बहुत सारे प्रोफेशंस में। So various types of audits exist. Performance measurement audit also should become a mandatory regulated thing for those who are going to manage the money of investors, whether mutual funds, whether portfolio management service providers, whether alternate investment funds. सबसे पहले इनके आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स लगाओ। तो अगर म्यूचुअल फंड्स को एक लिमिटेड रेंज में लॉन्ग शॉर्ट करना अलाउड है, तो सारे रेगुलेशन को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कंप्लायंस के लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, रिटर्न्स प्रॉपरली कैलकुलेट हो रही है, रिटर्न्स किस कैपिटल बेस पे यूज हो रही है। कैपिटल बेस को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एंड लॉट ऑफ दीज मेथड्स कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट। सर्टेन assumptions करने पड़ते हैं। Certain assumptions have to be made only by qualified professionals, so that out of conflicting situations, realistic reasoning is provided by them in the audit report. With these kind of circumstances, if I had made this choice for taking this capital aggregation model or this capital computation model, इसके अंदर में ये प्रॉब्लम था, इसमें ये था, and this method seems to have the least problems. Over the years, somebody will change his performance measurement computation method. तो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में इनकम रिकॉग्निशन का मेथड चेंज हो गया, एक्सपेंस रिकॉग्निशन चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज हो गई, तो वो ऑडिटर के नोट्स में आता है और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अफेक्टेड होती है। तो जैसे कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, किसी का भी प्रॉफिट लॉस उसी तरह से कैलकुलेट होना चाहिए, उसका कॉस्ट लगना चाहिए, ऑडिटर उसके पैसे लेगा, और जिसके पास साइजेबल सेंसिबल बिजनेस है, जिसके पास ये बैंडविड्थ है कि भैया मेरे को इतना साइजेबल काम करना है, उसके लिए मैं परफॉर्मेंस के मेजरमेंट का हेडेक उठाऊंगा, ऑडिटर हर किसी चीज पे साइन नहीं करेगा, तब तो वो प्रोसेस राइट है। तो अब अगर कोई अपने आप को लिमिटेड कंपनी नहीं बनाए और वो एक अपनी गॉटन अप प्राइवेट पार्टनरशिप्स ऑफर करने लग जाए अपना परफॉर्मेंस एडवर्टाइज कर करके, तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर में से भी उसको बैन कर सकता है। तो एक तरफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जब तक स्टैंडर्ड्स नहीं आते, कंप्लीट ब्लैंकेट बैन चाहिए, चाहे सेंसिबुल हो चाहे बुलबुल हो, आई डोंट केयर। Somebody in cashing on a crisis and will get popular, it's okay, fine, but they are not the solution. I at the same hand appreciate if somebody took the lead, but that lead is not enough. That lead will create 10 other problems. Undoubtedly the mess that has existed so far, जिस तरह से बिल्कुल गटर छाप काम हो गया था कि साइकिल पे घूमने वाला रात को चाय वाला जो रात को चाय बेचता है, वो भी ट्विटर के ऊपर में परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट करके किसी न किसी को मूड रहा था, तो जो गटर तक काम पहुंच गया था, गटर से निकल के वो नालों तक पहुंच जाएगा, नालों से निकल के वो नहर तक पहुंच जाएगा, पर फिर भी रहेगा वो अनप्रोफेशनली और विद एंडलेस नंबर ऑफ लूप होल्स। एंड देन सेबी मस्ट इन्वेस्ट सम एफर्ट इन क्रिएटिंग इट्स ओन इंडिया जीपीएस। सीएफए इंस्टीट्यूट का जीपीएस अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, so maybe SEBI should have a timeline कि next 3 years we are going to adopt phase 1, phase 2, phase 3 of performance measurement standards, और हर एक अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए वो होना चाहिए। अब अगर आप आ जाते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए, एडवाइजर के फैसले मानने के लिए क्लाइंट बाउंड नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए इंडिविजुअल सारे क्लाइंट्स के क्या साल में परफॉर्मेंस थे उनको भी वो एग्रीगेट करेगा, तो भी वो अनफेयर हो जाएगा, ईदर अगेंस्ट द एडवाइजर और अगेंस्ट द क्लाइंट।
और अलग अलग क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है, अलग अलग क्लाइंट का कॉर्पस अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इवन इफ रेगुलेटेड बाय सेबी, will end up remaining more of a gray area. So the better regulation perhaps SEBI can look for is standards of ethics and standards of professionalism. Very well defined standards of professionalism should be there. कि क्लाइंट की प्रोफाइलिंग कितनी रेगुलरली होती है, क्लाइंट का भी फीडबैक उसमें आना चाहिए कि इज द एडवाइजर गिविंग इनफ अटेंशन और नॉट. ये मतलब don't get me wrong, it will look like a very rude example and it's not being given insensitively. मतलब ये तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ या अपना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ. इट इज लाइक दिस कि भैया अरेंज्ड मैरिज इस जमाने में होती थी और कोई चला जाए, लेट यू नो, प्लीज टेक इट जेंडर न्यूट्रली, आई एम गोइंग टू अटैक मेन हियर नॉट विमेन. और कोई लड़का देखने गए हैं लड़की वाले, और लड़की का मामा पहलवान है, तो लौंडे को बोले कि भाई तू हमारी लड़की को सुखी रख सकेगा कि नहीं, तेरे डोले शोले दिखा. तो दैट्स आस्किंग टू मेक अ फिजिकल. भाई एस्टिमेट कर लो, अंदाज लगा लो किस तरह के खानदान का लड़का है, कैसा डील डॉल है. और कोई हद पार कर दे, बोले कच्चा खोल के दिखा, आर यू एलिजिबल टू बी मैरिड और नॉट. तो दिस हैज गॉन इनटू द एक्सटेंट ऑफ आस्किंग फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स और आस्किंग फॉर these things from everyone, gone to the extent of voyeurism. And this voyeurism is not actually inflicted at all by those who are the target audience. एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करने के लिए फेक बाबा लोगों ने नए नए प्रपंच रच दिए हैं. इनकम टैक्स की रिटर्न से किसी का परफॉर्मेंस साबित हो जाएगा. कोई कोर्स बेच रहा है तो क्या गुनाह है जी. भारत में लाख आदमी अपनी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं. ऑडियंस को चूज करना नहीं कि इस आदमी में वो कॉम्पिटेंस है कि नहीं. उस कॉम्पिटेंस का फैसला क्या इनकम टैक्स की रिटर्न से होगा या उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, उसकी टीचिंग स्किल से होगा, उसके नॉलेज की डेप्थ से होगा. राइट. बायजूस लॉस मेकिंग कंपनी है और वो लॉस मेकिंग ही रहेगी. तो बायजूस का जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तो बायजूस अपने कोर्सेज नहीं बेच सकता है. तो ये सब भी जो मन गढ़ंत बातें जो पैदा कर दी जाती हैं, जो जलने भुनने वाले लोग हैं. जर्नलिज्म का करियर था, चौपट हो गया और कुछ कर नहीं सकते, घर में बैठ के सट्टा मार रहे हैं, तो वो उठा के लिख देंगे कोर्स बेचने वाले सारे लोग फ्रॉड हैं. तो इट्स बिकम ए टोटल जंगल विद एवरीबडी हैविंग सम वेस्टेड इंटरेस्ट. बिना स्वार्थ का तो इस संसार में कोई भी नहीं है. इन अ कंप्लीटली अनरेगुलेटेड वर्ल्ड, इन अ कंप्लीटली अनरेगुलेटेड वर्ल्ड, हर आदमी अपनी अपनी पतंग उड़ा रहा है दूसरे की काटने के चक्कर में. तो उससे सोशल मीडिया पे जो आक्रोश भी है वो एक तरफ मिसगाइडेड आक्रोश है और उसके साथ बहुत खतरनाक वैरायटी का गाइडेड प्रोवोकेशन है. मिसगाइडेड एंग्स्ट के साथ, मिसगाइडेड एंगर के साथ वेरी वेरी गाइडेड प्रोवोकेशन है. और इस तरह का क्लेवर प्रोवोकेशन बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति तक जनता को पहुंचा सकता है. तो जब तक सेबी रेगुलेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, सेबी को एक ब्लैंकेट बैन मारना चाहिए और सारे होम डिपार्टमेंट्स को उन्हें लेटर लिखना चाहिए कि भैया अपने अपने शहर की, अपने अपने मोहल्ले की पुलिस को सतर्क करो कि एक नए किस्म का ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, जैसे फिशिंग का फ्रॉड है. उसके लिए आरबीआई को आके काम करने की जरूरत नहीं है. फिशिंग हो रही है तो जिसके खिलाफ हुई है उसको जाके थाने में कंप्लेंट करनी पड़ेगी. तो जिसको भी ट्विटर के ऊपर में सही या गलत किसी भी रकम का सेबी एक बार बैन कर दे कि कोई भी अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट बिना चैनल के पब्लिश नहीं करेगा. कौन सा होगा वो चैनल, सेबी के साइट पे डालो, स्कॉर्म के साइट पे डालो. सेबी विल, सीए का सर्टिफिकेट लगा हुआ, सेबी अपने कोई पेज बना सकता है जहां हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की वो प्रोफाइल रखेगा और वहां पे उसके सारे सर्टिफाइड ऑडिटेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्कोर्स रखेगा. कोई कैपिटल लाइन जैसी सर्विस है, आएगी ऐसी सर्विसेज भी जब ये सिस्टम प्रोफेशनलाइज हो जाएगा, जो जो लोगों के ऑडिटेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट को कंपैरिजन टेबल में डालेगा, डेटाबेस में डालेगा. तो यहाँ पे तो एक चोर दूसरे चोर को चोर साबित करने के लिए कि मेरे पर नजर नहीं पड़े दूसरों को चोर साबित कर दो, कोई बोलेगा इनकम टैक्स दिखा, कोई बोलेगा तेरा कच्चा खोल के दिखा तू मर्द भी है कि नहीं है. राइट. कोई बोलेगा तेरा डीएनए टेस्ट करा ले, तू एक बाप की पैदाइश नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ क्रैप विल विशिएट द एटमॉस्फेयर मोर. नैरेटिव सेट होने की जगह पे नॉन नैरेटिव बन जाएगा. So ये सारी नॉनसेंस वॉइसेस शुड बी इग्नोर्ड. The voice that matters should speak up. And if SEBI is burdened with work, it should state that we are releasing this white paper soliciting suggestions. We'll formulate a committee which will initiate India's first performance measurement standards. Who it will apply to,
जिसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना और रिपोर्टिंग करना रेगुलेटरली रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही करेगा, सोशल मीडिया पे नहीं करेगा। एक कंपनी अपना मुनाफा डिक्लेयर करके ट्विटर पे लिखती है क्या? स्टॉक एक्सचेंज को उसको लेटर भेजना पड़ता है कि ये हमारा इस तरह का ऑडिटेड रिजल्ट है, सीए की साइन के साथ। और सीए साइन करने में भी रिलक्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंज की डेडलाइन जा रही है, तो भैया सीए ने रिफ्यूज किया, पर फिर भी ये हमारे हिसाब से हमारा रिजल्ट होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज उसको मीडिया में रिलीज करता है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है, और प्राइवेट रेगुलेशन क्रिएट करने की जो भी कोशिश है, या तो वो क्राइसिस के अंदर चीप लाइमलाइट गैदर करने का एक कमर्शियल इनिशिएटिव है कि मेरे और 50,000 ट्रेडर्स क्लाइंट बन जाएंगे, तो वो उसका प्राइवेट मोटिव है। चैरिटेबल मोटिव होगा तो एक थिंक टैंक ग्रुप बनाएगा कोई, विल क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप टू लॉबी नेटवर्क, क्रिएट पीआर, compel the media to take up this issue कि SEBI should create regulation in this area. So I am not criticizing it. कुछ ना अपने स्वार्थ से लोग सब कुछ करते हैं और उसी में कुछ ना कुछ भला हो जाता है। तो कम से कम ये भला हो गया कि ट्विटर पे से एक बार डर के मारे गंदगी बंद हो रही है, पर ये डर अब सच में पक्का डर बनना चाहिए, इसका एक रेगुलेशन बनना चाहिए। और रेगुलेशन के लिए रेगुलेटर को कुछ इन्वेंट नहीं करना पड़ेगा। वर्ल्ड के ज्यादा इवॉल्व्ड मार्केट्स में चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। रजिस्टर्ड सीटीएस जो है, कमोडिटीज ट्रेडिंग एडवाइजर, उनको परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्टिंग करनी है। सीटीएस जो है उनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी अलाउड है। तो सेबी को अपने रेगुलेशंस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना होगा, और जो उसको फॉलो नहीं करता है उस पर सेबी पेनल्टी लगाएगी, फाइन लगाएगी, प्रोसिक्यूशन करेगी। बट अदर देन दैट, if an outright cheating is happening and outright fraud is happening, so all of these so-called positive influencers, some ex-journalists or current ones, why don't they motivate people to go to the police station and complain about this person? Everybody is trying to bask in this limelight. एक बार स्पॉटलाइट है, बिजली कड़की आसमान में, तो अपना अपना डिस्को सब लोग दिखा दो और सब लोग अपनी अपनी फोटो खिंचवा लो कि ये फ्लैश गिर रहा है, इस पे सबसे ज्यादा चमकदार फोटो मेरी आ जाए। तो आई एम नीदर डिसमिसिंग एनीवन, नॉर आई एम सेइंग व्हाटएवर एनीबडी इज डूइंग इज रॉन्ग, बट इट्स not happening with the right intentions, and it is still not taking us in a completely right direction. That's all I wish to say. And Rima, carry on further with others. Hello. Yeah, who is that? Is that Vikram? Yes, Vikram here. Okay, perfect. Go ahead. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रीमा। मैं जो बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक ये वेरीफाइड और अनवेरीफाइड स्क्रीनशॉट का मसला है, मुझे नहीं लगता है इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन है बेसिकली, क्योंकि ये तो हर तरीके से चल रहा है। अभी तो ट्विटर पे आ रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ न्यू जाम तारा, इसको मैं तो ट्वीट तारा बोलता हूँ अभी, कि ये चलता रहेगा। अभी तो 4 दिन दिन में 4 कॉल्स तो वैसे ही आ जाते हैं, इंदौर से आते हैं, राजकोट से आते हैं, मुंबई से आते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ये ले लीजिए। और वो स्क्रीनशॉट्स तो व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, उनके टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स हैं, तो कहाँ कहाँ इनको रोकेंगे? बट द प्रॉब्लम इज दिस, हु इज देयर टारगेट ऑडियंस? देयर टारगेट ऑडियंस इज दोज पीपल या तो जिनको बहुत लॉस हो चुका है ऑलरेडी, हु वांट टू कवर देयर लॉसेस, और जो कि बिल्कुल न्यू कमर्स है, जिनको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, एंड दे आर ड्रिवन बाय द ग्रीड। सो स्टॉपिंग देम, जब तक ये टारगेट ऑडियंस है उनके पास, इनको रोक नहीं सकते। बट आई फील, और जहां तक सेबी का काम है सर, जहां सेबी आरबीआई भी इतना कुछ नहीं कर पाई जब जामतारा चल रहा है, इज जस्ट दैट कि एक अवेयरनेस कैंपेन ही चल सकता है कि आप अवेयर कर सकते हो लोगों को कि आप इनके चक्कर में ना पड़ो, इनको फॉलो मत करो। बट स्टॉपिंग दिस एब्सोल्युटली, it is not looking possible. Okay. So who do we have next here? Have we missed anybody? प्रहलाद here. Okay. Okay, go ahead. Yeah, first of all, thank you for giving me this opportunity. And यहाँ पे दो टॉपिक चल रहे हैं, एक तो सेंसिबल का स्क्रीनशॉट एंड सेकंड इज पीआर सुंदर का जो सागा चल रहा है. So I have my views on them, but before that I would like to, I mean, the way Sushil ji has articulated the thoughts about verified, unverified PNLs, it is quite good, and he has given a lot of thoughts behind it. But I think some of the टॉपिक्स दैट ही बात करते हुए जो उन्होंने निकाला है, उसमें बहुत सारे ऑलरेडी रेगुलेशंस है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एनालिस्ट एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. सो जो उनका ईयरली या फिर 3 ईयरली जो भी उनका होता है, क्लाइंट बेसिस, रिस्क प्रोफाइलिंग, वो एवरीथिंग दैट इज अ सेपरेट टॉपिक.
बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ल्यूरिंग. सॉरी माय ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है अबाउट वेरीफाइड स्क्रीनशॉट, द लॉजिक बिहाइंड व्हाट आई थिंक दैट सेंसिबल केम आउट कि हर कोई कोई भी उठ के अपना धंधा चलाने के लिए कुछ भी गलत शलत फेक रिकॉर्ड्स बना के बस अपना चलाया जा रहा है, विच इज वेयर यू नो द थिंग इज रॉन्ग. एंड दे हैव इनिशिएटेड वन, क्या बोलते हैं ना, एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे कहीं पे कुछ तो लगाम लगे. जैसे एक दो हैंडल्स है मैं देख रहा हूँ जहां पे उन्होंने अपना पुराना यू नो स्क्रीनशॉट डिलीट करने स्टार्ट कर दिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमने जो फ्रॉड किया है लोगों के साथ वो पकड़ा जाएगा. सो एटलीस्ट अ फियर हैज बीन प्लांटेड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल जिन्होंने गलत काम किया है. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो अच्छी बात है कि समवन हैज टेकन एन इनिशिएटिव, एंड ऑफ कोर्स एज सुशील जी हैव सेड, सेबी शुड टेक दिस फर्दर, एंड देयर शुड बी अ कमिटी टू अंडरस्टैंड द रिपरकशंस ऑफ दिस. और जैसे कि उस भाइयों ने भी बोला कि यहाँ पे जो लॉस, जिनका सबसे ज्यादा लॉस होता है वही लोग टारगेट बनते हैं, जो न्यू आते हैं वो टारगेट बनते हैं, जिनके पास बहुत ग्रीड है वो लोग टारगेट बनते हैं. बट अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि उनको कुछ पता नहीं है. That doesn't mean that somebody can take advantage of those people and make money out of their pain and their loss. So first thing is Sensible ने जो किया है, for me I think it is a good initiative, और उसको कंटिन्यू करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप सही कर रहे हो तो व्हाट इज रॉन्ग इन शोइंग योर प्रॉफिट्स, बट एट द सेम टाइम द पर्सन इफ ही मेकिंग अ लॉस, वो अपना उस दिन का वो लॉस नहीं दिखाएगा, वो खाली अपने प्रॉफिट दिखाएगा. सो अगेन दैट इन इट बिकम्स डिबेटेबल क्वेश्चन कि किस कहां तक बात सही है और कहां तक बात गलत है. सो द एम्बिग्यूटी विल ऑलवेज रिमेन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इट इज द पर्सन हु इज फॉलोइंग अ पर्सन और बिलीविंग इन समवन के वो सही को फॉलो कर रहा है या गलत को फॉलो कर रहा है. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम सेंसिबल, दैट इज व्हाट आई वांट टू से. And of course everybody will have their own bias, their understanding whether to follow somebody or not. A sensible man will understand कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो नहीं समझता है वो ठोकर खा के समझ जाएगा. Now when it comes to PR Sundar, I सी डोंट वट एवर आई से, इसको ऐसे मत लीजिए कि मैं PR सुंदर को फेवर कर रहा हूं, बट मे बी स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हिज साइड एंड माई साइड ऑल्सो. एक तो PR सुंदर वॉज अ नो नेम फ्यू ईयर्स बैक, but when he came on Twitter, उनका YouTube, and then he became famous. And if somebody is following him for a quite long time, he or she will understand that वो बहुत बार लाइव अपना वेबसाइट पे जाके PNL डाउनलोड करके दिखाते थे. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ट्रू, इट कैन बी फर्स्ट एज वेल, बट जिस तरीके से वो अपना PNL दिखाते थे, आई थिंक समवेयर ही इज राइट कि उसका प्रॉफिट होता, उनका प्रॉफिट होता था. हो सकता है रिसेंटली ही हैज मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस व्हिच ही डज नॉट वांट टू शेयर. ऑफ कोर्स एनीबॉडी जिसका भी कोई गलत हुआ या खराब टाइम चलता, वो वर्ल्ड को ऐसा मुंह खोल के नहीं बोलता कि भाई मेरा अभी प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे को फॉलो मत करो या कुछ मत करो. तो सबका अप्स एंड डाउन आता है और उसका आया है. बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री फ्रॉम द पॉइंट दैट व्हाट ही हैज रिटन ऑन द ट्विटर. भले आपको कोई कितना भी ट्रोल करे, कितना भी तकलीफ दे, बट द लैंग्वेज जो आप करते हो, या आप फिसल गए हो, चलो दो एस्पेक्ट है, या तो आपने जानबूझ के गलती की या तो आपसे गलती हो गई. इफ दैट हैज हैपेंड, एटलीस्ट अ मैन शुड हैव दैट करेज कि आके बोले कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मैं इस प्रेशर में था या उस प्रेशर में था, एंड दिस हैपेंड, एंड यू शुड एक्चुअली अपोलोजाइज एंड से कि बॉस गलती हो गई एंड आई विल मेंड माय वेज एंड स्टार्ट डूइंग इन द राइट वे. So that is one aspect of it. Second is what he says that Sensible as a company was behind him to promote, and with whatever engagements that they have, अगर उनका deal नहीं हुआ, he has not promoted. He is currently promoting 2-3 companies whenever on his videos and everywhere else. तो अगर वो नहीं हुआ है, it's a thing that इसको टैग किया जा रहा है कि वो अपना वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, सेंसिबल का था, एंड देन वॉट एवर ही हैज सेड ऑन द ट्विटर. तो उसको लोग एक एक तरीके से यूज कर रहे हैं टू मेक फन आउट ऑफ इट, एंजॉय कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, विच इज आई थिंक नॉट राइट. सो नंबर वन, सेंसिबल
great initiative. It has to be built. Of course, regulatory bodies has to come. Second thing, PR Sundar is wrong when it comes to the language and the way he has spoken. But no one can force a person कि भाई तू तेरा verified screenshot ही दे या verified चीजें ही बता, because it is nowhere written in the law. If you want to follow someone, please do follow. If you don't want to, don't follow. But that does not mean that you force someone and कि आप दिखाओ ही करके. And one thing which Sushil ji said it appropriate, I mean एकदम perfectly, कि अगर कोई उस पे अगर जैसे आज स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, कल कोई बोलेगा कि भाई आईटीआर दिखाओ. आईटीआर इज नॉट द राइट जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन कि ये प्रॉफिट यहाँ से आया है. कल किसी ने अपना आईटीआर भी दिखा दिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अच्छा आईटीआर में इतना है तो आप हमको बाइफर्केशन दिखाओ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, अदर सोर्सेस कितना है, सैलरी से कितना है, तो आप वो दिखाओगे. सो देर इज नो एंड टू इट. द पॉइंट इज अ सेंसिबल मैन हैज टू पुट थिंग्स इन हिज माइंड एंड अंडरस्टैंड कि बॉस मुझे कहाँ पे लगाम लगानी है, कहाँ तक मुझे इंसान को फॉलो करना है और कब मुझे इसके साथ जुड़ना है. बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट अ पर्सन इन योर रेगुलर लाइफ इन अ डे. You spend time, you talk to the person, you understand the person, and then when things connect, that happens. So yeah, that's it from my end. Okay, Sushil ji, are you around? Do you agree with what all Prahlad said that No, regarding the I'll chip screenshot? in later. बाकी लोगों को भी आप लोग, I have already spoken a lot, so I did not react to every contribution. Move on to the next speaker then. Okay, perfect. And also a small personal plugin, if you can. I'm speaking from this account today, so if you can follow my account, that is Rima, which is there's a co-host, that'll be a big deal for me. Okay, and moving Yeah, on. the least we can do is pay some courtesy to Rima. She's one young kid I discovered on Twitter, and she's uber talented. Every conversation she has hosted, I've seen actually structures out well. Sorry, Rima, I'll call you a kid because that's the only way, the right way to express my gratitude for you. So she's an exceptionally bright kid, and I wish she makes a career out of her unique skills. Thank you so much. That So do this follow means her. so much. Okay, so moving on, I think okay, I think Nitin ji wanted to speak. So if you're around, go ahead, or I'll go to the next person. Okay, Yeah, okay, thank over to you. you. Thank you, Sushil ji, and thank you, Rima, for this opportunity. Uh, uh, to begin with, verified by Sensible, I think, is a good idea. Yes. Is it working? Yes. Is it enough? No. Because I'd like to take a step back and think in terms of some platform level interventions that are required. चाहे फेक स्क्रीनशॉट्स हो, चाहे फेक एडवाइजरी हो, चाहे कोर्स सेलिंग हो by these rookies who themselves have maybe 1-2 years or even less than experience giving stock advisory to people. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये the gravity of situation needs to be dealt with on high priority. So इसमें जरूरत इस समय पे हर चीज के साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं हम इन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाए ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है. दे आर लेवरेजिंग द पावर ऑफ सर्टन प्लेटफॉर्म्स, बी इट ट्विटर, बी इट टेलीग्राम, बी इट व्हाट्सएप, बी इट यूट्यूब, बी इट फेसबुक और बी इट इंस्टाग्राम. तो कहीं ना कहीं पे जरूरत ये भी है कि हम इन सब प्लेटफॉर्म्स को भी साथ लेके चलें जब हम किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं पे इन लोगों का साथ होना भी बहुत जरूरी है एंड अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी बहुत जरूरी है. सरकारें जिस तरीके से फेक न्यूज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में आती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं पे हमें ये भी समझना होगा कि ग्रेविटी ऑफ दीज स्पिन ट्वीट्स इज ऑल्सो वेरी हाई. क्योंकि कहीं ना कहीं पे टिकट साइज इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व रहता है, लोगों के पैसे लगते हैं इसमें. बहुत लोअर लोअर मिडिल क्लास लोग अपने छोटे छोटे कैपिटल्स के साथ इन लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हैं. तो कहीं ना कहीं पे जरूरत ये भी है कि हम एक जब भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन करने की बात हो तो प्लेटफॉर्म्स को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल रखा जाए और इन लोगों को भी जो ओवरऑल रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है उसका हिस्सा बनाया जाए. इन लोगों को भी बोला जाए कि आप भी अपने लेवल पे मॉनिटरिंग करें, फिल्टर करें इस तरीके के अकाउंट्स को, डीएक्टिवेट करें और एक इस तरीके का प्रोसेस सेट हो कि इस तरीके के लोग उभरने से पहले ही कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म लेवल इंटरवेंशन से बिठा दिए जाएं. तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म लेवल इंटरवेंशन एक बज़वर्ड होना चाहिए जो कि एक इस मैनेंस को बड़े लेवल पे खत्म करने में शायद सेबी की मदद कर सकता है.
That's all I wanted to say. Thank you, Sushil ji. I wish you explained a little bit more. You know, you began so beautifully. Is the beginning made by Sensible good? Yes. Is it making a difference? Yes. Is it enough? No. What is not enough in this? And what more do you want to see in the system? जी सर, एनफ से मेरा मतलब ये था कि एनफ इन द सेंस ओवरऑल मैनेज है. अब वेरीफाइड बाय सेंसिबल की नॉलेज ही शायद बहुत कम लोगों को होगी. से इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, मैं 20,000 25,000 रुपए लेके स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करने आया हूँ, तो पहली बात तो मुझे सेंसिबल ही नहीं पता होगा कि क्या है, और वेरीफाइड बाय सेंसिबल ही नहीं शायद पता होगा क्या है, राइट. तो कहीं ना कहीं पे वो इंटरवेंशन एक सर्टन लेवल ऑफ इन्वेस्टर के लिए सही है, जिसने शायद कुछ समय मार्केट में बिता दिया है या वो कुछ लॉस ऑलरेडी ले चुका है, उसको रिकवर करने आया. लेकिन जो एकदम नया आदमी है, वो शायद वो सेंसिबल के स्तर तक जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसको मे बी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और ऑप्शन चेंज डेटा क्या होता है शायद उस बारे में पता ही नहीं होगा, राइट. तो बेसिकली एक नाइव इन्वेस्टर को बचाने के लिए जरूरत है कि प्लेटफॉर्म्स भी आगे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्विटर का यूज हो रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने में. उसके बाद फिर लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे उनको राउट कर लेते हैं, तो टेलीग्राम एज एन ऐप का यूज हो रहा है. कहीं ना कहीं पे इंस्टाग्राम पे 17 18 19 साल के बच्चे लोगों को शेयर मार्केट की एडवाइस देने लगते हैं, तो इंस्टाग्राम का यूज हो रहा है, फेसबुक का यूज हो रहा है, लोग अपने लेक्चर्स देते हैं वहां पे लाइव जाते हैं. तो इस तरीके की चीजों का यूज अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स की भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इनके ऊपर काबू पा सके. जिस तरीके से हमारी सरकारें फेक न्यूज पे या एंटी नेशनल ट्विटर हैंडल्स पे या और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे एक्शन लेती है, इनको दबाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी ग्रेविटी भी हमें समझने की जरूरत है कि शायद ये लोग मात्रा में बहुत कम हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा है, क्योंकि लोग अपना हार्ड अर्न मनी इनकम इनके कहे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और शायद डुबा देते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर ये प्लेटफॉर्म्स भी जागरूक हो जाएं और रेगुलेटरी मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाएं, और इनकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट हो कि बॉस यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर कल को ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है एज अ प्लेटफॉर्म कि आप इस तरीके के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे पनपने ही ना दें, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो. तो ये मैं दैट वाज अ मेन पॉइंट आई वांटेड टू कन्वे. All ओवर टू right. यू. Did you want to add to that, Sisha, or should we circle back to you? It's contributors, and it's already 9 o'clock. So let's try and wind up by 9:30. So it's just 9 o'clock. No, it's But not yeah, just 9 o'clock. It's Saturday 9 o'clock. We've spent an hour. We can keep talking the same stuff, keep repeating it, rehashing it for 5 hours. Unless and until there's a debate, unless and until there are some points that come up afresh, मतलब प्रजल्प करके कोई फायदा नहीं है. प्रजल्प is nothing but small talk. If there is big talk, we can extend. Let's see how it runs up till 9:30. I think it's going to die out before that. If anything substantial or new comes up on which any heat generates, any light generates, it's fine. Otherwise, it's goody. तो goody को फिर 9:30 पे wrap up करना चाहिए. That's my suggestion. In any case, you are the host. You choose. I may have to step out beyond 9:30. So you choose. okay, let's see how it turns out, else we'll wind up. But let's see. Okay, so anybody I've missed, please let me know because I cannot. Yeah, hi. Okay, So, yes. hi, Tika here. Sushilji, good evening. After this long time, I'm speaking in your space. So, Sushilji, इस पे बात करनी थी sensible पे. So, I know there are many individuals who take some few amount from HNIs, few HNIs. So, HNI से 10-10, 15-15 लाख कलेक्ट किया, एक हैंडसम अमाउंट कलेक्ट किया, 1 करोड़ उसको ऑप्शंस ट्रेडिंग पे लगा के वो पैसा बनाते हैं. पैसा बनते हुए भी मैंने देखा है. बट ये टोटली थोड़ा पार्शियल लगता है, क्योंकि जब से मोदी साहब आए हैं 2013-14 से, तब से लेकर निफ्टी ने सिर्फ तेजी ही देखी है. 6,000 वाली निफ्टी 18,000 हो गई, और शायद और 2 साल में 18,000 की समझो कि 10,000 और भी बढ़ जाए. बट इट इज अ वन साइडेड गेम. किसी ने मंदी में पैसा बनाया हो ऐसा किसी ने देखा ही नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड इज एटमोस्ट नेसेसरी. अब उसमें कैसा है कि
ये सब जो भी हो रहा है, जो बता रहे हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह, दे आर ऑल अनरेगुलेटेड एंटाइटीज। कोई अगर रेगुलेटेड एंटाइटी है तो 100% वो सेबी रजिस्टर्ड है। सो नॉन सेबी रजिस्टर्ड एंटाइटीज अपने आप का परफॉर्मेंस बता रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो इन अ तेजी का एनवायरमेंट। दिस इज समथिंग पार्शियल। किसी ने मंदी हो, एक मंदी का दौर चले 2 साल 3 साल और परफॉर्मेंस करके दिखाई हो, तो ये टोटली ऐसा कभी देखने को ही नहीं मिला 5-7 साल में। सो दैट इज माई पॉइंट, दैट एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या रेगुलेटरी लेवल पे कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। सो दैट इज माई वन पॉइंट। नाउ व्हाट इज सेंसिबल, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो इट इज अ ब्रोकर, इट इज एन एडवाइजर की लोगों का पैसा लेके मैनेज कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। होम टू ट्रस्ट, दैट इज ऑल्सो। कोई अगर एंटाइटी लेके बैठा है, कोई रजिस्टर्ड वे से, प्रोफेशनल वे से कोई मैनेज कर रहा है, सेंसिबल इज जस्ट अ वेबसाइट, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि शुड आई ट्रस्ट सेंसिबल और शुड आई गो थ्रू सेंसिबल, उसकी बातें सुननी चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है। सो दिस इज वन पॉइंट। आई विल नॉट स्पीक ऑन एनीथिंग ऑन पीआर सुंदर। यस सर। Perfect. Okay. Okay. Let's First of figure all, out Lata ji on this. yeah, sure. Lataji, welcome. If you're around, please. Hi, Sushil Hi, Rima. Hi. I'm sorry I've come in a little late. I've just come in 5 minutes back. And I just heard the tail end of another speaker. I think it was Nitin. He mentioned that we need to get the platforms like Twitter and Facebook and all to be held responsible in some way, and that they should do something about these things. Now, I don't know whether Nitin is aware or many of us are aware. In fact, only this morning I read on Twitter they had a whole something like 95% of the people who used to fund Twitter were Democrats, and something like 3.5 or less than 4% were Republicans. And so during the last presidential elections, Twitter went out of its way to blank out a lot of stuff which the Republicans were talking about, like Hunter Biden's laptop, in which a lot of shady deals with Ukraine and all were very much found. So they had blacked out a lot. In fact, one of the spokespersons of the Republican Party was also blocked just by mentioning a certain, I think it was US Today or something, which had carried that news item. And she just quoted that and she was blocked. So the danger of, such things happening on a platform which should be actually neutral, that is what I'm saying, because this kind of power given to platforms is not really a healthy sign, because that in fact probably played a huge role in getting Joe Biden in power. Facebook and Google and all these people were called in the House of Senate to answer for all these things. But it's only now that Elon Musk is coming out with this whole scam. It started last night, and today's part 2. So the platforms cannot be held responsible. If you give them that power, they will they will try to bend one way and blank out the other part. So my feeling is that platforms should be left neutral. This is something nothing to do with Elon Musk. What is going to be put here? He's not going to be able to monitor this. It's not about politics. This is just about the financial markets. And I think this is the power is should be with SEBI. Sensibull is a private individual or a website or whatever. And a point might come that he might be bought off by somebody to tarnish somebody or to show someone as innocent when they are not. So I think that private entity, in my mind, not such a healthy sign. I think it should be a much bigger body, a much more maybe retired magistrates or somebody who's in the know of the IT industry like Narayan Murthy or something like that. That should have these algorithms tallied and see okay, how is this thing happening like SEBI is trying to do. I don't think the platforms should be playing a role in this. This is my view.
So Ji, can I while add? while you said some Can, things that make sense to me, but can, still is an incomplete picture. can I add Uh, one word? Yeah, just Kika, we should not talk over each other. So I'm muting you. So when you talk, Kika, I'll listen. So see, I'll tell you, it's not about they getting taken over or whatever. The bigger issue is, even if SEBI itself were to do it, taking screenshots will create illusions. It will not create illumination. So verified screenshots versus unverified screenshots is pure bullshit. It ended up so happening that because the verified screenshot were getting launched and some people who are obviously guilty of continued fraud ended up reacting like idiots, doing this stupid talking about daughters and all. मतलब क्या कहते हैं ना, जब वो पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली होती है तो पहले कुकुड़ को चालू कर देता है मुर्गा. तो सेंसिबल के लॉन्च पे ओवर रिएक्शन हो गया और इससे लोग जाग गए. ये एक फैक्ट है कि लोग जाग गए और एक बवाल मच गया. बट बवाल मच गया इज नॉट ए लॉजिकल प्रूफ दैट सेंसिबल इज राइट और verified screenshots are right. There are 1 million manipulations that verified screenshots will do. That is point one. So whether retired judges or SEBI creates an outsourcing, I feel very appalled that even a very astute person who's currently the SEBI chairman has ended up making a remark coincidental to these happenings. She has not clarified what does she mean that third party services for extending support to regulation is the right time. So they can open their call center, they can have their open up their BPO and all, but they cannot compromise on principles of investment, principles of risk, principles of measuring performance, principles of fair and accurate reporting. So outsourcing has to be done. The right channel for outsourcing is that any financial data that is for to be utilized for decision making by the public. Why do companies whose shareholders have become shareholders by choice, the unscrupulous, the unsuspecting people can also tomorrow buy the shares and become shareholders? Creditors can end up extending too much credit to a company. So a company being an artificial person, no, that's not the issue. With a company, a lot of public perception is involved, and public at large may end up acting on good faith only, and merely on good faith. Financial exposure should not be taken, and that's why the system of doing their audits was necessary. There is a good reason that public's welfare is involved, public faith and decorum is involved, public trust is involved, a trust in the rule of law is involved, and that's why cost audits were made compulsory. That's why secretarial audits are compulsory. That's why company secretaries are regulated professionals. They have legal obligations. They can end up incurring heavy penalties, fines, going into jail. Like Enron scandal happened, the Arthur Andersen had to be shut down globally. They ended up having so much financial liability they had to shut down. It's another thing the rascals again opened it with other names, and nobody really clearly knows those names. But I know a few of them. That Arthur Andersen became a few other firms, but never achieved the glory back of that big four. तो वो सब चलेगा. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी प्राइवेट बॉडीज हैं, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड अप बिकमिंग a regulator unto themselves, and lots of accusations against them, but from a completely, so there are norms, and government will time to time specify that. So if Sensible wants to become a business that will become a performance auditor for all, it will not have the exclusive privileges. Others will also want to jump in if there's money in it. So if they're offering it for free, the answer comes right there. Anything that is offered for free, you are the product. You are the product. You will ask your investment advisors to go and open a trading account with Sensible. Sensible का screenshot दोगे तो ही मैं तुम्हारे यहाँ client बनूंगा. ये सपना पूरा नहीं होगा किसी का भी. It's a coincidence that they were launching, and some idiots who were outright frauds, they ended up panicking too hard. And this ruckus ended up happening, creating too much limelight on one uncouth, loudmouth, unsavory person. And in that ruckus, attention got shifted to the other side, to this one idiot. He's a certified idiot to my mind. In his entire social behavior is very, very unsophisticated, if I want to use a kind word. So, shoving the limelight onto one idiot,
thousands of frauds have got the time to delete their screenshots, have got the time to, change their stance. One particular guy I am very acidic about because he played too nasty with us. He was an ex-employee और उसको निकाल दिया था 15 दिन में. And he's been kind of selling that I'm a teacher, and he's giving outright open calls. And since nobody should be able to take any screenshots, this service called Cosmo Feed has come up, on which so many of these babas are selling their advisory services, research services. On a Android and a iOS app, you can invoke security policies in one single click from the back end that no screenshots or videos can be recorded. That is why some course sellers you would found विंडोज बेस्ड कोर्सेज की फीस अलग है और एप्स की फीस कम है क्योंकि एप्स पे सिक्योरिटी हायर है. सो द क्रैप इज विदाउट regulatorily specified performance measurement standards. Nobody should report any performance. If tomorrow regulator decides that anybody can participate in a tender or a across the table negotiation and appoints a sensible or a bulbul or a big bull or a chulbul as one of the performance measurements agencies, they will have to be also regulated. They will have to have certain standards they will have to follow. And since they are not qualified to do the audit, eventually for public consumption, an audited statement of performance will be necessary, and eventually the chartered accountants will have to come in. So why complicate the process? Data gathering for performance has to be done by providing the broking trading statements to your auditor. And tomorrow, to make the audits seamless, quick, fast, the regulator may make it mandatory, and some brokers may make an offer, even without mandatorily, that they may offer it voluntarily, that all your trading data can be through an API downloaded directly into your chartered accountant's server. A chartered accountant can be given only a data download API connection or a login password. So these are very small things. So somebody has taken up activism, which is appreciated. But that activism is for gaining the limelight. They've got it too soon, which is good. So a good start has been made, but this good start is not in the right direction. And all of these claims of income tax ka statement dikha do, yeah, people started, then playing this idiocity. ब्रांड न्यू कार 70 लाख की आती है, फोर्थ हैंड गाड़ी 9 लाख में खरीद लो, उसके साथ गॉगल्स पहन के हाईवे पे फोटो खिंचवा के लगा दो, और कोई चेला चेला हैंडल, सबके 50-50 चेला हैंडल है, 150 ट्रोल हैंडल है, और चेला हैंडल आके लिखेगा वाओ सर दिस कार लुक्स एज कूल एज यू, और बाबा जी लिखेंगे पिछले महीने की कमाई है. तो उसको भी लोगों ने पंक्चर कर दिया कि अब ऑनलाइन इतना डेटा मिलने लग गया, यू जस्ट पुट द कार नंबर एंड यू विल गेट टू नो दिस गाय इज अ फोर्थ हैंड बायर, किस प्राइस पे खरीदा, इंश्योरेंस भी पे नहीं किया, ईएमआई बाकी है. तो देखिए ये पाखंड चलेंगे. बिना एमबीबीएस की डिग्री किए बहुत से डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. कैलकाटा शहर में मैं जानता हूं कई लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में इतने इतने माहिर हैं कि आपको कई साल तक पता ही नहीं चलेगा कि ये लॉयर है. कोर्ट में जाएगा वो, अब आपका पूरा मैटर खड़ा कर देगा, सारी ड्राफ्टिंग कर देगा, सब कुछ कर देगा. वो बेसिकली अनरजिस्टर्ड सॉलिसिटर है, बट ही प्रिटेंड्स टू बी अ लॉयर. तो ये कानून के दलाल लोग हैं. तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में भी परफॉर्मेंस के लिए आएंगे. तो अनलेस एंड अनटिल रेगुलेटर डज समथिंग अबाउट इट, and till the time regulator is overburdened with other work, it should clamp down. Nobody can report any kind of performance, and if anybody does it, regulator should educate the investors. इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर एजुकेशन फंड एनएसी बीएससी के चल रहे हैं, 80% उसमें से कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है. कुछ साल पहले तक ये कबाड़ा था कि सर्टेन एक्सचेंज का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में सेबी बहुत नाराज था कि वो सब गलत तरीके से पैसा साइफोन ऑफ हो रहा था. अब सेबी को उनको हिसाब देना पड़ता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ. उसमें भी बीच बीच में एलिगेशंस आते हैं. तो देखिए पसीना तो हर इंसान को आता है, किधर भागोगे, कलयुग है, हर जगह कुछ ना कुछ हेरा फेरी होगी, और उसमें कांस्टेंट हमें रिजुविनेशन करना पड़ेगा प्रोसेस का. बट एटलीस्ट दिस डिस्कोर्स शुड बी सेट राइट. Media should take this up as a responsibility upon themselves to let everyone know a one-off screenshot or a 1 month's performance or a 1 week's performance is only a selective self-selection bias. जो टेबल पर मिठाई है
आप खाली वो मिठाई उठा करके बोलो लड़के वाले देखने आए हैं, अजी ये सारा खाना घर में ही बनाती है, रसगुल्ले इसी ने बनाए और मालूम पड़ेगा गांगूराम से मंगवाए थे बगल में, राइट? सो so so there are so many of these issues. I think another mighty speaker is just calling me and maybe he wants to step in. I'll take his call. Rima, you roll the conversation forward. Okay, we'll wait for you. I don't think I've missed anybody, but Rima, I'll I just check. wanted to Huh, say one thing here, sure. if I can make a point that, for example, there are a lot of people joining Twitter every day, and there are some of us who've been there for a few years, right? And if SEBI comes up with a regulation that people cannot post screenshots or cannot give this kind of advice, which or offer these courses and seminars and webinars without their permission, okay? Not, they don't have to be registered for a webinar or anything, but they have to inform SEBI in advance, couple of weeks in advance, that they're planning to do the seminar. These are the fees they're going to charge, and this is their area of expertise, and these are the number of years they've been doing this. When they know that there is someone watching them, there's going to be a little bit of a fear, because right now it's been like open season. Everybody was in it and everybody was doing whatever they wanted, putting screenshots, fabricating screenshots. We saw that from Ashwini Gujral's time. A lot of this stuff had come out at that point also. But at this point, if SEBI comes in very strictly, even those of us who've been there for many years on Twitter, the moment somebody comes up with a screenshot or with some kind of advice, we can gently ask him a question. Have you informed SEBI before doing this? The moment this thing comes up, that person will shut up because they know that this matter is going to be taken up. So I think this is an important step that SEBI needs to take. And with active participation of people who are already in the market for a few years and who've been on these platforms for a few years and who can sense the people who are trying to be opportunists and trying to squeeze money out of the amateurs, the uninitiated poor people who are trying to make a little bit of money to meet their expenses. So I think this would be it. But I don't think platforms like Twitter and Facebook can really be given this kind of responsibility. Thanks a lot. That's all I wanted to add. No, it can even become even simpler. Do you know something on Twitter? The advertising policy is clear. You cannot advertise financial derivatives on Twitter. Oh, So, I didn't know that. yeah, you just go and create an advertising account on Twitter and you see if, any ad you try to write and you write the word derivatives in it or options or futures in it, that ad will not get published. So why But can't SEBI issue a diktat to Twitter and Facebook yes, that nobody can post any performance on this and Twitter should put it in your account ban guidelines, and then people just have to simply report it to Twitter that this tweet that's is right. Yeah. promoting any kind of verified or unverified screenshot. So that initially has to come from SEBI and has to So filter that to Twitter. SEBI will not On wake up until we all cry. yes, If yes, yes. 5,000 tweets happen, that SEBI should wake up that nobody should publish any performance without proper regulated guidelines on performance measurement and performance publication only on an appropriate forum, and that SEBI can easily issue a one-line letter to Twitter that amongst your various account blockages rules, if people report any kind of performance reporting of trading and anybody reports that on Twitter, that account should get blocked because it's in line with your advertising policy. Sara Yes. tamasha khatam ho jayega. Yeah, this whole public outcry that has come has, So what I'm going to in a do as way, my part of the contribution is that holding a space with 2, 3, 400, 500 people and leaving that recording out will not be enough. I'm going to start penning articles and put them in renowned publications. It's going to reach minds. I'll make sure, my pointed thoughts are placed on the table of finance minister. I've yes. influenced some policies in the past. I'll do that again. But this And joke has to stop. I just wanted to say that it's in a very twisted way. It's very fortunate that he has made those unfortunate remarks about women, about virginity and all this rubbish that he has written. It's very, in a very And and strange and way. imagine at a time when the finance minister and the SEBI chief both are women. Yes, I know. The best part is that he This has is made this this is a remark in this is a the this is a gold medal in foot in the mouth disease. yes, and he has actually triggered off something very huge
because he has reacted like this, and it has caused a public outcry, which has made SEBI wake up. So it was a very, in a very funny way, it's a very good thing that has happened. That there's a kind of a cleansing process that has started as a result of this nonsense that he did. So this is the natural process of karma that Krishna That's explained. right. जो That's right. कुकर्म करेगा लास्ट में भरेगा. बट वो लास्ट आते आते गेम अब गंदा और हो रहा है. वेरीफाइड स्क्रीनशॉट से नया गेम चालू हो जाएगा. This is the danger. This is the danger. No, somebody can create another sensible like service, and then he can connive with 10 traders and issue fake certificates. Yes. So गंदगी का रूप बदल रहा है. गंदगी है. गंदगी का सिंपल बात है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्रोफेशनल मेथड है. SEBI should define what is the right professional method for Indian accounting policies, Indian exchanges, Indian trading systems. And SEBI should make it a mandatory rule. Anybody publishing any such uh, performance measurement outputs that are not in line with these requirements and not certified by an appointed auditor will incur so much penalty and fine. And SEBI should just create one page on its portal that anybody notices any such behavior, simply उस tweet का screenshot लो, उसका URL लो, SEBI को upload करो, 72 घंटे में बंद हो जाएगा. And SEBI should write a letter. So I've gathered a number of ideas from here. Maybe by next Sunday, I'll start putting out some well-argued articles in publications that are read by people who matter, and then maybe make a pitch and ask for a presentation opportunity. But we will all have to contribute to this. ये तो गंदगी अलग अलग रूप लेती रहेगी, अपॉर्चुनिज्म के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी. रीमा, वी आर 4 minutes लेफ्ट. ऐसा कोई रीत रिवाज है हमारे देश में कि जो स्पेस 3-4 घंटे नहीं चले वो असफल स्पेस है? If a good or well organized space has been able to capture all the points in a proper timely fashion, then we can always call it a day. Though you are the host, but I cannot insist it beyond this point. We can close. I mean, considering it's a Saturday, it's a weekend. I think a lot of people have joined in and stayed with us. So, considering that we've had a very decent space. So, if you want, we can close now. I mean, I think we've covered most So I people. would like you to do a sum up. You being the hostess, you do the sum up of whatever we discussed today, and then we'll call it a day. I think you sum up the best, but I can take a minute. Maybe last two speakers will take because it may be impolite. We still have 4 minutes. So Devraj and Amit are the last two speakers we'll take. Rima will sum up and then we'll go and eat dinner. Perfect. So, Devraj and Amit, we'll hear from you, and then we will probably, be closing. Not probably, madam. Be little determined. Well, okay, we'll do that, and I'll just take 5 minutes. So, if you're around, I'll just take a quick five. No, we are closing the space in 5 minutes. Up, please ruk jao unless and until there's a fire around. सिर्फ 5 minutes में नहीं होगा. हो जाएगा. 2 minute speakers का 2 minute आपका. In 6 minutes we'll wind up, or you do the summary right now. No, cool. We'll take. Let's stay disciplined. See, uh, sensibly timed, sensible amount of conversation. We can keep repeating it. इसको मैराथन सेशंस बनाना, रामायण महाभारत करने का मतलब नहीं. जस्ट रीमा 5 मिनट रुक जाओ unless and until you have some urgency. No, that's okay. I can stay back 5 minutes. So all right, Okay. Devraj first 2 minutes max, Amit 2 minutes max, and Rima then you have 2+ minutes. Amit, Okay. Cool. unmute yourselves, share your thoughts. हेलो एवरीवन. सुजीत सर, आपसे मेरा एक सवाल है. लाइक ईटीएफ के बारे में आप मतलब 2 मिनट में कुछ बता सकते हो तो जल्दी से बता दो, क्योंकि 5 मिनट बचा है. किसके बारे में? ईटीएफ. नहीं, ये जनरल सामान्य ज्ञान वर्धन का संशोधन क्या बोलते हैं उसको? कार्यशाला नहीं है. मुद्दे पे बात कीजिए. मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बटन दबाओ, आंसर मिल जाएगा. सो आई एम म्यूटिंग यू एंड द रिमेनिंग स्पीकर ही इज ऑलरेडी लेफ्ट. सरीमा सम इट अप. सर 2 लाइन में एटलीस्ट आप जैसा नहीं, बोल सकें. बिल्कुल नहीं. दुरुपयोग मत कीजिए इतने सारे लोगों के समय का. कृपया गूगल कर लीजिए उसे आप. Rima, please sum it up and let's call it a day. So I think we've had a very productive session today because people were very logical and reasonable, and people shared their views, and I think even we got a lot of insight into this whole
issue of whether sharing screenshots is it like is it the right way to go, because we are all looking for guidance, like we all have something or the other to learn from somebody else, but is it the right way to go, or how much credibility is there in this whole process? And if we can somehow regulate the entire thing of sharing screenshots, or like what else can we do to try to be more credible? So I think that's all that was we discussed today, and we all have our different views, but we did have a lot of common grounds that there should be some kind of regulation, basic regulation, because people can be misdirected very easily. But then it's also like the responsibility is also ours as consumers to not consume opinions of just about anybody, and to be more aware that there's a lot of manipulation that can happen into screenshots, or even into datas. Like datas can be very easily manipulated into projecting what we want to project. So like I personally I feel it's a personal thing. Like the first thing would be to be very much aware ourselves, that who are we following, who are we listening to, what are we believing in, because we don't show our failures in social media, right? We don't show our failures, we are just showing our successes, and a lot of manipulated things. So like take that all into account and think about all that, and then probably take decisions, especially when a lot of money is involved. Like go with your gut feeling, do a lot of personal research, don't listen to any of us, don't listen to like any probably any of us before like before you make a financial decision. So all that, and I'd request Sushil sir to take 2 minutes to conclude. We would very much love to hear from you. So over to you. And also, quick plug-in, please follow my other account. I've come as a co-host from Rima, but I'm actually handling this account today. So if you can, that'll be a very big deal for me. Otherwise, it's okay. So okay, Sushil sir, over to you. सो सी ये कलयुग है, चोर पुलिस का खेल बंद नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लूट मचाने के लिए पूरी खुली आजादी दे दें. सो फार इट वाज अ फ्री फॉर ऑल, जिसको जो जी में आए करे. और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये तमाशा चल गया. तो मैं रेगुलेटर से दुखी हूं. रेगुलेटर को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, तमाशे के अंदर बहुत सारे तमाशे होंगे, क्योंकि चोर मोर बन जाएगा, और फिर मोर बन के वो दूसरे को चोर बोलेगा, और दूसरा चोर भी बोलेगा नहीं तू चोर है मैं मोर हूं. तो वेरीफाइड स्क्रीनशॉट चोर मोर का खेल है. कम से कम एकदम से आउटराइट गंदगी बंद हो जाएगी, पर इसका मतलब है आप सेंसिबल में सौदा करोगे, उसको ब्रोकिंग दोगे तो ही आपका है, तो 20 और ब्रोकर आ जाएंगे. तो 20 और ब्रोकर बोलेंगे मेरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बेटर है. चलो, तो लड़ाई वहां तक पहुंचेगी जब तक ठीक है. फिर उसके बाद ब्रोकर्स आपस में एक दूसरे को अंडरकट मारेंगे. वो ब्रोकर ना 50 ट्रेडर्स को फेक स्क्रीनशॉट बनाने की फैसिलिटी दे रहा है, तो पब्लिक तो वहां की वहां कंफ्यूज्ड. अच्छा चलो, वो भी खत्म हो गया कि अगर सेबी ने उसके अंदर में कोई डिजिटल ऑडिट्स कर दी, एपीआईज का ऑडिट हो रहा है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईटी सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे, तब भी बेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो एक पल की कहानी है. परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के अंदर दांत खट्टे हो जाएंगे. कितनी कैपिटल कब यूज हुई, कितना रिस्क था, शार्प रेशियो कैलकुलेट करो, शॉर्टिनो रेशियो कैलकुलेट करो. ये सब बाबा लोगों ने गूगल के अंदर में जाके विकिपीडिया खोल लिया, गूगल खोल लिया, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ट्रेडिंग सिस्टम. 80% लोगों को अगर मैं ओपन बुक एग्जाम दूं और उनको सिर्फ क्लास 12 का स्टैटिस्टिक्स पूछोगे आप, सब लोग जानते हैं मैं किसको बाबा बंगाली के नाम से पुकारता हूं. अब भी मेरे साथ इस स्पेस को खत्म करने के पहले 5-6 लोग उसको ट्वीट करो. सिर्फ पुरानी ट्वीट्स हैं, उसको डिलीट कर दिया होगा उसने, मैंने टेस्ट कर लिया. कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को, मेरे साथ मिले थे किसी सोशल पे, क्या बड़ा कैलिबर वाला बंदा है, उसके 1 लाख फॉलोअर हैं. एक काम करो, अभी उसको ट्वीट करो, सर यू आर सो ब्रिलियंट. रीमा, प्लीज डोंट माइंड दैट आई एम यूजिंग द बांग्ला एक्सेंट टू इंडिकेट हु आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, একটু টলারেট করবে. ইভেন আমিও প্রবাসী বাঙালি আছি, রক্তে মাংসে. সো স্যার ইউ আর সো ব্রিলিয়ান্ট, what beautiful call you give. Sir, can you at least tell me one thing? Back testing is to be done. Of course back testing has to be done. As an authority he will reply. हम बोला अब अगला क्वेश्चन को डालो. सर, डू यू डू बैक टेस्टिंग ऑन
स्टॉक प्राइसेस और ऑन रिटर्न्स। सेकंड क्वेश्चन में विकेट डाउन, वापस प्रिटेंड करने के लिए ऑफ कोर्स तो लिखेगा ही, प्रिटेंड करना है, अथॉरिटी डिस्प्ले करना है, ऑफ कोर्स बैक टेस्टिंग हैज टू बी डन ऑन स्टॉक प्राइसेस ओनली। मैं बोला अब उसको लिख, सर 10 years ago निफ्टी वाज एट 1000 and a 100-point fluctuation in Nifty in 10 years ago would have made a 10% fluctuation in a day, and today Nifty is at 20,000, 15,000 था, तो मतलब यहाँ पे 1500 point fluctuation will only make it equivalent. So isn't it true that heteroscedasticity and serial correlation problems are going to be avoided if we first convert raw stock prices into returns? धड़ाक ब्लॉक कर दिया उसको, right? So let's do an open book examination. ओपन बुक, खुला किताब। साला चोरी करने के लिए भी किताब से जिंदगी में किताब खोलने का अनुभव तो होना चाहिए, चौथा मारने के लिए। एमबीएस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कड़क प्रोफेसर होते थे, ओपन बुक एग्जाम देते थे। और हमारा एक प्रोफेसर तो इतना धांसू था, डॉक्टर बीएम पटेल, he would give a list of 20 questions. I am going to put out any 5 out of these 20 questions, and he would give that questionnaire 24 hours before the exam. And not only open book, A4 साइज का जो 4 शीटर होता है ना, चारों कंबाइंड, उसमें आप माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइंग ग्लास अपने पूरे बॉडी पे जितना भी नोट्स लिखना है लिख लो, फुल बॉडी पे नोट्स लिख लो, और एक A4 शीट के ऊपर लिखने मिलेगा, किताब अंदर ले जाने नहीं मिलेगी। दैट वाज हिज वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल, कि कम से कम इतना पढ़ पढ़ के नोट्स बनाओगे पूरी रात भर में जग के, तो भी कुछ पढ़ाई हो जाएगी। तो ये बाबा लोग का वही वाला हाल है। और पब्लिक को क्या है ना, स्टैटिस्टिक्स का स नहीं पता है, तो क्वांट अखाड़ा खुल गया, क्वांट टेम्पल खुल गया, क्वांट साइनागॉग खुल गया। तो जो भी नया नया खेल आता है गांव में, मदारी वही डुगडुगी बजाने लगता है। तो ये सब जो खेल तमाशे चल रहे हैं, इनको प्राइवेट अप्रोर्स कैन क्रिएट अ शेकआउट एंड क्रिएट फियर। आई विल टेल यू व्हाट, देयर आर 3 classes of people: those who are very talented and those who are, there are broadly first 2 classes of people: those who are very talented, बुद्धि बहुत है, और दूसरी कैटेगरी जो औसत बुद्धि के लोग हैं। अक्सर औसत बुद्धि के लोग मेहनत के रास्ते से साफ सुथरी अच्छी सफलता की जिंदगी बना लेते हैं। जो कम लोगों की कैटेगरी है, बहुत बुद्धिमान लोगों की, बुद्धिमान नहीं कहूंगा, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, उसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, एक जिनकी कुबुद्धि है और एक जिनकी सद्बुद्धि है। कुबुद्धि वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वो पढ़ लिख लेंगे ना, तब भी उनको कबाड़ा किए बिना खाना हजम नहीं होगा। जब वो फीलिंग आती है ना, आज मैंने किसी का काट लिया, तो वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएगा, उसकी भूख खुल जाती है। तो दिस टेंडेंसी टू हैव प्लेड ए फास्ट वन ऑन अदर्स, ये कुबुद्धि समाज में पढ़े लिखे लोगों के अंदर है, और बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए भी शातिर लोगों में है। सिनेमा हॉल के बाहर जो पहले पॉकेटमारी होती थी, स्मगलर, गैंगस्टर, घर में चोरी करने वाले लोग जो घर तोड़ के घुस जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, रात को ले गए, आपकी गाड़ी अगर गलती से आपने अंदर नहीं लगाई और थके हुए आए, रोड पे खड़ी करके सो गए कि सवेरे अंदर कर लूंगा, मालूम पड़ा आपका स्टीरियो निकाल के ले जाते थे। अब तो सारे इनबिल्ट आते हैं। तो ये सारे कांड करने वाले लोगों के पास बुद्धि की कमी नहीं, बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी। दे आर वेरी क्लेवर, दे कैन ब्लेंड इन द शैडोज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई खड़ा है आपकी गाड़ी के बगल में। अब विंडो से भी रात को देखोगे, पता नहीं मेरा थोड़ा बीप हुआ है सिक्योरिटी सिस्टम। तो इस तरह के जो लोग हैं, जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं था, तो स्टॉक मार्केट में बड़ी संख्या में नए नए लोग घुस रहे हैं, तो नौकरी कर नहीं सकते, एस्पिरेशन हाई है, सट्टा करके तबाह हो चुके हैं। तो जो जार्गन जुर्गन सीख ली है, अब वो यहाँ आकर के रोज नया फिड़का मारेंगे। किसी ऑथर की पूरी किताब टूक दी, उसके अंदर में कॉपीराइट में नीचे अपना नाम डाल दिया, बाबा बंगाली कॉपीराइट। फिर उसके बाद उसने वो ट्विटर का हैंडल ही बंद कर दिया। उस हैंडल का नाम होता था शुभदीप नंदी, उसमें भी 60-70 हजार फॉलोअर बना लिए खरीद खरीद के। फिर उसको बंद करके अब शुभदीप नंदी 16 बना दिया। लोग उस हैंडल को भूल गए, क्योंकि उसके जितने भी एलिगेशंस थे उस प्लेजियरिज्म के एक्ट के, वो सारी ट्वीट्स को आप शुभदीप नंदी 16 पे खोजोगे वो मिलेगा ही नहीं। तो पाखंडी चोर उचक्के रहेंगे, पर रेगुलेशन का काम इतना ही है कि चोरी को कठिन बनाइए। ईमानदारी से करने वाले काम से ज्यादा चोरी के रास्ते को कठिन बनाइए। बंद हो जाएगा ये तो भगवान विष्णु ही करेंगे जब कलयुग खत्म होगा।
तो बंद हो जाने की संभावना को भूल जाइए। और एक और चीज, स्टेटेड इन utmost good faith to actually empower our so called retail brethren। वो रिटेल का जो एटीट्यूड है, मुझे कोर्स फ्री में चाहिए, मुझे डीप डिस्काउंट पे चाहिए, गाली गलौज करने लग जाएगा, आप इतना कोर्स कॉस्टली क्यों बेच रहे हो, आपकी सर्विस इतनी कॉस्टली क्यों है, ये लोग जीवन भर रिटेल रहेंगे। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट विल नेवर अलाउ ए ह्यूमन बीइंग टू अचीव एक्सीलेंस। एंड यहाँ पे भी मेरे को रेगुलेटर से शिकायत है, आपने रिटेल को दामाद है ये तो ऐलान कर दिया, पर दामाद का ख्याल कैसे रखा जाता है वो आपने कभी नहीं किया। तो तो वो वो हर्टेड दामाद जो है ना, कि मेरी ससुराल में मेरे को, ये तो सारे पूरा स्टॉक मार्केट मेरी ससुराल है, वो ससुराल जैसा आदर सत्कार खोज रहा है बेचारा रिटेल। इट्स अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एंड एनीबडी हु रोज टू एनी ग्लोरी और सक्सेस इन एनी करियर इन लाइफ हैड टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, हैड टू एक्ट फॉर हिमसेल्फ। सो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्रिएट करके अर्ली स्टेजेस में जो रेगुलेशन था, आज का सेबी बहुत अलग है। पोस्ट 92 स्कैम में जब पूरा देश का पॉलिटिकल आर्किटेक्चर रैटल्ड हो गया था, उस टाइम पे एक अनफॉर्चुनेट पोजीशनिंग हो गई थी द देन सेबी चीफ के द्वारा कि डिसीजंस कोई कठोर लेने नहीं है, पर फील गुड फैक्टर बना दो, रिटेल को पैम्पर करके दामाद का दर्जा दे दो, पर दामाद की खातिरदारी तो छोड़ दो, माथे पे तिलक लगाने वाला कोई नहीं है। और ये बेचारा जिसके नाम पर लिख दिया गया कि तुम दामाद हो, रिटेल इन्वेस्टर को बोल दिया तुम देश के दामाद हो, उसके माथे नारियल तो पकड़ाना हाथ में छोड़ दो, ₹1.25 शगुन का देना छोड़ दो। सवा तो आजकल कोई नहीं देता, 501 के नीचे कोई लेता भी नहीं है, मतलब शगुन भी मिनिमम उतना हो गया है। पर साला यहाँ ₹1.25 पकड़ाने वाला कोई नहीं, माथे पे तिलक निकालने वाला कोई नहीं है, उसको बिठा के खाना खिलाए, उसके पाँव धो ले, पाँव नहीं धोए कम से कम बोले सॉरी दामाद जी यहाँ टॉयलेट है, पैर धो लो, गमछा ले लो, कोई नहीं है। पैम्परिंग कर दी, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट क्रिएट करके उनकी डीएनए को परमानेंटली अपने वीकेंड कर दिया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर एम्पावरमेंट, both functions must happen simultaneously and without stopping। इन्वेस्टर पैम्परिंग, इन्वेस्टर अपीजमेंट करके छोड़ दिया। मोदी ने आके किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपीजमेंट बंद कर दिया, पर उनके लिए रॉक सॉलिड काम किया। तो अपीजमेंट इज हिपोक्रेसी। स्टॉप इन्वेस्टर अपीजमेंट, स्टार्ट इन्वेस्टर एम्पावरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आउटराइट क्राइम, आउटराइट अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल थिंग्स मस्ट हैपन। जब तक उसका रेगुलेशन नहीं बन सकता उसको बैन कर दो। जैसे आपने मार्केट के रेगुलेशन की हिस्ट्री में बहुत से प्रोडक्ट्स बैन हो गए और टाइम पे फिर उसका कुछ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना तब उनको स्टार्ट किया। तो रेगुलेटर, जैसे क्रिप्टो करेंसी सेड वी विल रिप्लेस द गवर्नमेंट, सो टुमारो समबडी विल से सेबी तो कुछ करेगा ही नहीं, हम प्राइवेट रेगुलेशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी भी पिटाई होनी चाहिए। सो दिस इज अ चैलेंज दैट विल कीप ऑन surfacing in different forms until Kaliyug ends. But the only expectation for we to believe that we are in a business and not in a scheme, for stock market to never appear like a scheme because it's the avenue of capital formation for the whole economy। और भी बहुत सारे कबाड़े होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको भी रेगुलेट करने का जो सिद्धांत है, जैसे कोर्ट्स का भी सिद्धांत है कि नॉट ओनली जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल, but a court would be appropriate in conducting the process of administering justice in a way that it is seen by people as doing justice। तो सेम वे रेगुलेशन बन गया कि अनरजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अनरिसर्च रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ये सजा मिलेगी, तो इतनी फीस से भी कलेक्ट करता, हायर 50 मोर पीपल। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, द मोस्ट लेविशेस्ट अपार्टमेंट्स in the city of Bombay are rented for even mid-level SEBI executives। So resources की कमी नहीं है, 5 मिनट दो खाने के लिए। रिसोर्सेस की कमी नहीं है, willingness की कमी है, prioritization की कमी है। So I'm hoping the ruckus that has happened now will become a basis for us to be ready to raise as many ruckuses as possible, to actually push for and ask for। कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा, वापस आर्म चेयर पे जाके बैठ जाने से नहीं होंगे। वी नीड नॉट वेट फॉर अनदर अनकूथ अनसिविल पर्सन टू berate our daughters, to berate our civilization, to berate our social and spiritual values। We need not wait for that। So more than blaming SEBI,
more than blaming anyone else, more than blaming media, we need to remember we are a society of miracle seekers. चमत्कार की खोज में भटकता इंसान, यही है मेरा भारत। जैसे रिलीजियस स्पेस में रोज बाबे पैदा हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होंगे। तो जब लोगों की संवेदनाओं को बहुत ज्यादा घुटन होगी, जैसे बाबा राम रहीम का कांड लिमिट क्रॉस कर गए तो एक बार बवाल मचा दिया, पर इलेक्शन की टाइम पे उसको भी बेल मिल जाती है, वो भी सुन रहे हैं, जेल में पूरा सारे साधनों से जीता है। तो ये आशा मत करना इस कलयुग में कि भगवान विष्णु साक्षात किसी भी एक रेगुलेटर में, किसी भी एक ऑफिसर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु आपके और मेरे हृदय में नहीं है। हम सबने मिलकर इस कलयुग को अपने कंधे पे लेके सजाया हुआ है। तो पीपल विल गेट द पॉलिटिशियंस दे डिजर्व, पीपल विल गेट द रेगुलेशंस दे डिजर्व, पीपल विल गेट द बाबाजीज दे डिजर्व। जिसको बाबे की तलाश है, कितना ही रेगुलेट कर लो, ट्विटर पे नहीं तो उसको ट्रेन में मिल जाएगा। तो चमत्कार का प्यासा अगर है समाज, इतनी बड़ी डिमांड है मिरेकल्स की, किसी के पास पेशेंस नहीं है 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करे, छोटी छोटी कैपिटल से ट्रेड करे, 2 साल तक धंधा सीखे, उसके बाद भी कैपिटल को स्लोली इंक्रीज करे, लॉस लग गया तो फिर एक बार साइड हो जाए, अपने आप को रिपेयर करे, हील करे। भाई साहब, ब्लैक बेल्ट कमाने के लिए टाइकोंडो में या किसी भी मार्शल आर्ट्स में 10,000 घंटे की इंटेंस प्रैक्टिस लग जाती है मैक्सिमम लोगों को। कोई विरला होता है जो 1,000-2,000 घंटे की प्रैक्टिस में ब्लैक बेल्ट बन जाता है। जीना पड़ता है 10,000 घंटे तक उस माइंडसेट के साथ कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। 10,000 घंटे अपनी जिंदगी के जीने पड़ते हैं कंप्लीट फोकस के साथ टू अचीव एक्सीलेंस इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। वो 10,000 घंटे की कमिटमेंट किसके पास है? बोला जी सुशील केडिया जी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत सारे उनके कॉल ठीक लगते हैं, धड़ाक ले ली सर्विस, उसके बाद जो बोल रहे हैं वो करना नहीं है। मेरे हर कम्युनिकेशन में मैं एम्फेसाइज करता हूँ, जितनी पोजीशन लेने की ताकत है उससे आधी लो। छोटा सौदा करोगे तो ब्रेन इमोशनल नहीं होगा, बड़ा नुकसान करने के बाद, पछतावा करने के बाद लोग उस बात को सुनते हैं। तो हम जैसे हैं हमारे साथ वैसा ही होगा। किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष देना, उस व्यक्ति ने जितना बड़ा अपराध किया उससे ज्यादा बड़ा अपराध है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम मुर्गा क्यों बने, हम मुर्गा क्यों बने। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ, दिमाग से तो बातें अक्सर हम करते रहते हैं, पर जब हम मिले इस तरह की बातें हों तो जो है मन में वो बताना है। You would rarely find a man who would have been angrier than me, even say 15 years ago, whenever I would see any act of cheating। किसी और के साथ कोई चीट कर रहा है, किसी को किसी भी लेवल की चीटिंग, चाहे वो फाइनेंशियल चीटिंग है, चाहे वो इमोशनल चीटिंग है, चाहे वो फिलोसफिकल चीटिंग है, मैं बड़ा नाराज हो जाता था कि ये घटिया आदमी है, गटर में जाएगा ये। बड़े बड़े लोग जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर क्रोध में भर जाता था, और बहुत ज्यादा मैं और मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे इस क्रोधी व्यवहार से परेशान रहने लग गए। You would easily not be wrong if you would say that I used to be a more intense form of Nana Patekar 15 years ago, ready to blow up my fuse on noticing any act of anybody shortchanging anyone. And then one fine day, it's a long story, I'll make it very short because as it is asked Rima, she's holding herself back, she was supposed to go back long ago. So only one last minute as a concluding thought for you to chew upon. एक दिन अचानक से अंदर से आवाज आई कि isn't this your ego, Sushil Kedia, that you hate, despise and get so angry at dishonest people? Or is it your frustration, Sushil Kedia, that you think you are so honest and you are still not so successful as you want to be? So फिर आवाज और आई आत्ममंथन पर कि वो बेईमान इंसान को भी उसी ने बनाया है जिसने हमें बनाया है, और उसको भी किसी मकसद से बनाया है। और वो मकसद ये है कि हमारे अंदर ईमान भले ही हो, पर भोले भोले इतने क्यों हैं हम? भोले नहीं है हम, अज्ञानी नहीं है हम, लोभ है हमें, हमें शॉर्टकट चाहिए। चीजों को स्टडी किए बिना अगर हम कमिट कर देंगे तो वो हमारी पाठशाला है। तो डोंट हेट ए डिसऑनेस्ट मैन,
Don't hate a specific individual who's practicing business wrongly. Be concerned about the atmosphere in which you are made to live. And despite a very good atmosphere given, a day may come that SEBI may become the world's most admired regulator. When everything about India is shining so much, it is very much possible in the realm of possibilities. और उसके बावजूद भी क्या ठग विद्या बंद हो जाएगी? लोग तो फिर भी ठगाएंगे, पर कम से कम, as my concluding 3 lines, खाओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको भी पेट दिया भगवान ने, कैसे तो खाओगे तुम। पर बस इतनी तकलीफ है कि मेरे घर के दरवाजे में खटखटाए बिना तुम घुस आओगे, मेरी टेबल पे बैठ के मेरा खाना छीन कर खाओगे, मेरी टेबल पर पैर रख कर बैठोगे और बाद में अपने गंदे हाथ मेरे शर्ट से पहुंचोगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर हाँ, मुझे प्रलोभित कर लिया तुमने, कुछ तो तुमने स्किल लगाई। गुंडागिरी नहीं अलाउड है, तो अगर मैं फंस गया तुम्हारे जाल में तो मैं सीखूंगा उससे। और जाल में फंसाने वाले काम अगर हो रहे हैं, उससे रेगुलेटर भी वेकअप होगा। और हमेशा ना इनोवेशन रेगुलेशन का कभी नहीं हुआ, राजा राम के समय से लेके अभी तक। हमेशा चोर इनोवेट करता है और उसके खोजे हुए नए प्लग्स को रेगुलेटर फिल करता है। कितने नए ताले बना लो, उनको तोड़ने के रास्ते चोर पहले निकालता है, फिर ताला बनाने वाली कंपनी और बेटर ताला बनाती है। तो चोर पुलिस का खेल चलेगा, बट कम से कम ये खेल चले, ऐसा नहीं हो कि पुलिस तो आराम से थाने के अंदर में खराटे भर रही है, जो हो रहा था इतने साल से, और पुलिस की जगह कोई और ले ले कि प्राइवेट सिक्योरिटी फौज आ गई, which is what Sensibull is doing. So we have to keep up the pressure of asking the regulator to keep improving things. But the more important thing is we have to constantly examine our own values, our own aspirations. कुछ लोग बड़ी आसानी से ठगा जाते हैं, कुछ लोग बड़ी कठिनाई से ठगाते हैं, कुछ लोग उस रास्ते जाते ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए, ये मेरी सलाह नहीं, ये मेरा अनुरोध है। Rima, you gave me 2 minutes and I've abused those 2 minutes to make it 10. I don't think you want to tolerate more. So, shall we call it a day? Well, it's a weekend, so we could wrap up, you know. You know, now again it will become a gender statement. It's not a private conversation. But you know, some Yes. people, I'll not say women, some people just love to talk, and you are one of them. So, we'll host another space soon. आज chill कर लो, अब जाओ खाना खा लो, right? Should we close it? Any expressions, any emoticons? अलविदा कह ले हम लोग. No, let's just close. If we keep on going, we'll keep on going for a lot more hours. So, Absolutely. So yeah, thank you so everyone for coming in. Should I say one? Maybe the next space we'll do it on a weekday so we can stretch it for longer hours. Could I just request Mr. Kedia if you could put down all these points and put them on your wall? It would be really nice. The नहीं points नहीं that नहीं. you have, I'm going to pen some influence making articles. fantastic, Give me about 8-10 days and then I'll post the fantastic, links of those articles. fantastic. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Good night. Have a nice weekend, everyone. okay, I'll just end it now. Thank And you. Rima, you can close the space and publish the recording, please. Yes, I'll just end it and do that. Okay, bye everyone.